So we continue with electric field. We'll work on this concept. Plus, we should move on to conductors and then to capacitance. So the focus of today's class will be primarily on these three topics. Okay? Now, in electric fields, suppose I ask you to find out say this is a line charge this distance is r and this point is p. Suppose I ask you to find out the value of electric field intensity at point P. How would you solve it? Okay, करो करो करके दिखाओ. लास्ट टाइम क्वेश्चंस कौन से किए दिखाओ जरा. लास्ट टाइम क्या किया था? ग्राफ्स किए थे हमने नल पॉइंट निकालने वाले. ना देखिए था. Okay. So how would you solve it? Now generally the formula which we use, which you must have derived also, is say if I have a finite length of charge and I wish to calculate electric field intensity at P, the perpendicular distance R is given to you and these angles are given to you, alpha and beta. है ना? ऐसे करते हो ना? And then you find out a relation for EY and EX. That's what you do. याद है relation? नहीं, alpha beta की terms में आएगा ना? The answer will be in terms of alpha and beta. What is the value of electric field intensity? There will be two components because alpha and beta are unequal. Therefore, there will be two components. वो components क्या होते हैं? याद है? What is the value of EY and EX? Don't remember? Chalo, I'll write two values. You tell me which is x-axis and which is y-axis. Which component represents x and which component represents y. Say I write k lambda by r into sine alpha plus sine beta. And k lambda by r cos alpha minus cos beta. If I were to ask you which is EX and which is EY, can you tell me? बता सकते हो सोच के? You feel that this should be
X component, and you feel this should be Y component. अच्छा, अगर मैं suppose ये दो values मुझे याद है, and I forget which is X, EX and EY, how will I find out? Tell me if this becomes infinite line of charge. Then which component should exist, EX or EY? No. If I take this section, the electric field will be along this line. So you'll have an EX and you'll have a EY. If I take an element here, then I'll have two components, EX and, so EX cancel ho jayega. EX will get cancelled if I take an infinite line of charge. Now, when I go on an infinite line of charge, what will be the values of alpha and beta? Kya values hongi alpha beta ki? Pi by 2. Now, if I place pi by 2 here, 0. And if I place pi by 2 here, which means this should be, and this should be, है ना? क्योंकि अगर infinite line of charge की बात करूं, then alpha beta will become equal, and this value will be, and this will become, which is logically correct also. लिखो. ठीक है, अब मैं काम करता हूं. Now this is tedious. We might remember it, we might forget it. Now I'll tell you one formula in which you don't require EX or you don't require EY. Like for example, I'll take the same problem. Instead of this, I know this is R. If I know this angle, theta, I'm 100% sure that the value of electric field intensity will be along the angle bisector. Yes or no? अभी आपने बोला कि अगर मैं अल्फा बीटा बराबर ले लूं तो EX कॉम्पोनेंट 0 हो जाएगा, सिर्फ EY कॉम्पोनेंट एग्जिस्ट करेगा. Y एक्सिस क्या लिया है आपने? What is Y एक्सिस? Y एक्सिस क्या डिनोट करती है? एंगल बाइसेक्टर. अगर अल्फा और बीटा बराबर हैं, if alpha and beta are equal, तो that means the line dividing alpha and beta becomes the angle. लॉजिकली भी अगर आप देखो, अगर मुझे इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जहां पर भी इसका एंगल बाइसेक्टर होगा, नहीं समझे बात, E उसी के along एक्ट करेगा. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट E, आई एम टॉकिंग अबाउट E net. Do you agree? So now your new formula becomes E net is 2k lambda by R into sin theta by 2. इसको नोट करो. हाल होता है यार. Do you understand what I'm saying? ठीक है.
Now, suppose I have to use this result to solve this. Okay, right? If I have a semi-infinite line of charge and I have to find out electric field intensity at this point P, क्या करेंगे आप? एक एंगल ऐसे, तो कितना वैल्यू आएगा? What will be the value of electric field intensity? ये कितना कंपोनेंट होगा और ये कितना होगा? अल्फा को 0 करो, बीटा को पाई बाय 2 करो, कितना एंगल आता है? करके दिखाओ. This will be k lambda by r, if this distance is r, and this component will be ठीक है ना? परफेक्ट. अच्छा, इसको ध्यान में रखते हुए what do you think, because of this conductor, what will the value of electric field intensity here? डायरेक्शन क्या होगा? k. ओके, एक ये होगा, कितना? What about this? इसकी वजह से सेम k lambda by और एक component. So what is the net electric field intensity? 2k lambda by r, because of this and this, right? They both will get cancelled. ठीक. अब ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है. I just now told you the electric field intensity net will be along the angle bisector. तो इसी के along होगा ना? Yes. Now, what is the angle it makes? Pi. Which means if I have to substitute here, this will be 2k. Yes or no? कितना आ गया ये? 2k. So this is also 2k lambda by r. So E net here will be, note करो, करो करो. Clear? Now suppose, understanding this concept, I want to find out force between two charged elements. Like for example, बताना ही मैंने करा तो नहीं दिया आपको पहले. There is a circular ring. ठीक है? Okay. And there is a semi-infinite line of charge. पहले तो नहीं किया हम लोगों ने.
Have we done this question earlier? Force between two charge elements. वो मैं पूछ रहा था. इसका जरा आंसर बताना कैसे किया था? Tell me the answer. पीछे नहीं देखना. It's a small test for you. Let me see. How did you solve this question? Fresh thinking से बताओ सोच के. Semi-infinite. हाँ, क्या बताया था? All these components will get added up. कितना होगा ये? If this is lambda 1 and this is lambda 2, ये component कितना होगा? अभी बताया ना? कितना होगा? K by lambda 1 by R. और ये पूरा चार्ज कितना हो जाएगा? 2 pi R into. This will be force between these two charged elements. You remember? याद है ना? Good. ठीक है? Now, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ते हैं, is this electric field conservative or non-conservative? Electrostatic electric field, is it conservative or non-conservative? I think when I was doing mechanics with you, I told you, no, what is the difference between a conservative force and a non-conservative force? क्या बताया था मैंने? Electrostatic electric field is a conservative field. Now, what exactly does it mean when I say it's conservative? It should have two fundamental properties. What should be the first property? It should be independent of the path taken to do work. ठीक है? Number 2, the net work done in a closed loop should be 0. And the third, the most important thing is that if electrostatic electric field is conservative, we can define what? Electric potential. That's most important. If electric field is not conservative, आप electric potential define ही नहीं कर सकते हैं. यही मेरा आज next topic है. Now, how do I prove that electric field lines or electric field is path independent? Suppose you get a question like this. A question लिखो. Electric field E equals xi cap plus yj cap. Perfect. Find work done in taking a unit positive charge from 0, 0 to 1, 1. Find
the work done. How would you proceed? Kar. Yes. Now, please understand and remember this. You know what mistake you're doing? This field exists in a plane, right? Now, when you write work done, what do you write work done as? Do you agree? आप ये लिखते हो ना? अब इसमें डीएल क्या हो जाएगा? What would be E तो हमको मालूम है, xi cap plus yj cap. डीएल क्या है इसके अंदर? How do you write DL in a plane? dxi cap plus, and I need to integrate this from 0, 0 to 1, 1. Now, when I say work done, I need to multiply this with charge also. Since I've taken a unit charge, I can multiply this by simply 1. नहीं तो अगर चार्ज का कोई वैल्यू दिया होगा तो आपको चार्ज का वैल्यू लेना पड़ेगा. Now, how do you integrate this? It will become x dx, बोलिए, 0 to 1 plus y dy. कहां से? This will become x square by 2, 0 to 1, y square by 2, 0 to 1, and the answer will be 1. Now the point is, we wanted to prove that electric field is conservative. I have found out the work done by this electric field moving charged particle from 0, 0 to 1, 1. इससे ये कैसे साबित हुआ? How have we proved that it is conservative? Can anybody tell me? इसको सॉल्व करने के लिए we did not need the relation between x and y. हमको x और y का relation की जरूरत नहीं पड़ी. We could solve this equation, this question, without having a relation. Now, what I mean is this. Just have a look at this. Suppose I take this question, y square I and xj cap. अब निकाल के दिखाना. अब निकालो work done. Can you find the work done now? ये डिस्कस किया था ना आपने? कहां पर? Mechanics. Where did they discuss this concept? किया था हमने डिस्कस? Very good. Clear? We cannot solve this till the time we have a relation between x and y. And the relation between x and y will be the path. So that means if I don't have the path, I cannot calculate the work done. Do you agree? Therefore, in this case, this electric field will become non-conservative. A question likho.
जरा स्लाइड दिखाना, नेक्स्ट करो, आगे और चलते जाओ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इससे आगे. ओके, रीड दिस क्वेश्चन. The question says an electric field E equals 10 xi cap plus 40 z k cap exists in the space. Take the potential at 0, 0 to be 0. Find the potential at 1, 2, 3. चलिए सॉल्व करके दिखाइए. जो कॉन्सेप्ट अभी बताया उस पर, उसके बेसिस पर आप सॉल्व कर सकते हैं. इसमें एक करेक्शन और करो, इसको ऐसे लिखो, E इक्वल्स लिखो, इसमें एक कंपोनेंट मिसिंग है. E इक्वल्स 10x i cap प्लस 30y स्क्वायर j cap प्लस 40z क्यूब k cap. ये है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा है यहां पर. इट्स 10x i cap प्लस 30y स्क्वायर j cap प्लस 40z क्यूब k cap. अब करके दिखाओ. He is asking you to find out potential at 1, 2, 3 if the potential at 0, 0, 0 is 0. Now tell me what is the relation between potential difference and work done? क्या relation होता है? Yes, girls, tell me. क्या लिखूं? Yes or no? ये रिलेशन कहां से आता है? ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? क्या ऑपोजिट किसके? एक तो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या होता है? द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन. याद आ रहा नहीं आ रहा? क्या होता है बताइए, पूरा रिलेशन बताइए, कि बोलिए सब लोग. द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज negative of by conservative forces. This relation is only true if the forces are conservative. Note करिए इसको. You can only use this relation if the forces are conservative. And the significance of negative is, yes, of course, potential energy is negative of work done. Also, in the direction of electric field, potential decreases. Two significance. Likho. In the direction of electric field, the potential decreases. This is the second significance. Now, taking this into consideration, solve this question and tell me the answer fast. इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिया है 10x i cap प्लस 30y square j cap plus 40 z cube k cap, and I want to move, or I want to find potential 0, 0 to 1, 2, 3. That's what I want.
of negative. Okay. See what the tau significances. I mean, what I think what she's asking is that what is the significance of a negative sign? Kaun explain karega? Yeah. What is the significance of a negative sign? And be loud. The direction of electric field potential decreases. Okay. And And potential the increases. change in potential energy is negative of work done by conservative forces. So two significances. Right, girls? How do we start with? Calico? I can say potential at 1, comma 2, comma 3 minus potential at 0, comma 0, comma 0 is equal to negative of जी बताएं क्या करूं 10x dx है ना भाई लिमिट्स क्या लूं आगे बताओ 30y square dy 0 to very good plus 40 z cube dz limits 0 to yes. This value is given as 0, so I can directly find the potential at 1, comma 2, comma 3. And what is the value? कितना आ रहा है सॉल्व करके बताओ minus 895 आ रहा है volts very good 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 excellent ठीक है okay write another question the next question is electric field equals to a xy I cap plus a into x square minus y square j cap ठीक है electric field is 2a x I cap I cap plus a x square minus y square j cap आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फंक्शन निकाल के दिखाना है फाइंड आउट द फंक्शन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल we know the relation dv is minus e dot dl and what is dl dxi cap plus dy करो 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 गिव अप मत करा करो ट्राई करो so it becomes a question of integration
मैं देख रहा हूँ. करके दिखाओ. Is anybody solved it? The competition is on. Let's see who fast solves the fastest. बहुत डिफिकल्ट है. बहुत डिफिकल्ट है क्या? कैसे किया? चलिए लेट्स स्टार्ट. ओके. dv इज माइनस, तो क्या ले लू उसको? 2, ठीक है ना, प्लस ऐसे लिख लू. हाँ भाई हाँ, बड़ा तीर मार लिया तुम लोगों ने. अब काम अब शुरू हो रहा है. हाँ जी, क्या करने का है? हाँ, 2ay प्लस y रहेगा ना, माइनस प्लस, and this will be, that's all. It's so simple. You use the concept of partial differentiation, right? Partial integration. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. अब इसका रिवर्स करते हैं. Wrap this off. Now let's do the reverse of this. Electric potential is given to you. Find electric field vector. V is minus 4x square. You have to find out the electric field vector. Yes. कुछ बता रही थी क्या? Electric field is minus del V by del X I cap minus del V by minus so in this case, what will be electric field intensity in this question? Plus लिखो. ठीक है, तो ये हमने 3-4 तरह के वेरिएशंस कर लिए. अब एक फाइनल वेरिएशन करते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. सपोज आई आस्क यू द वैल्यू ऑफ, लिखो, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V equals AXY. A is a constant, positive constant. A times XY. ठीक है, plot electric field lines on the XY plane. मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया आपको. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट करके दिखानी है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अभी तक आपने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी.
अब what is the difference between electric field lines and electric field intensity? When you draw a tangent on the electric field lines, we get the value of electric field intensity. अब क्या था, अभी तक क्या था, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकाला था. अब मैं चाहता हूं कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मालूम हो, मतलब आपको टेंजेंट का इक्वेशन मालूम है, तो वो कर्व का इक्वेशन क्या होगा? यही मतलब हुआ ना. If I'm asking you to find draw electric field lines, that means the tangent on those lines would represent E. And you can find out a relation between V and E. So you know where the tangents are, and you have to find out what the lines are on which these tangents have been drawn. मजा आ गया ना? Happy? खुश हो? Are you happy? Lagmira? Are you happy and excited? How is the performance in test going on? टेस्ट कैसे, मार्क्स कैसे आ रहे हैं? आज किसका टेस्ट है? कैपेसिटेंस तक आ रहा है? ठीक है. कुछ कर भी रहे हो, वैसे कुछ कर रहे हो, या हो कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? लेट मी जस्ट चेक क्या चल रहा है. देखा तो कर क्या रहे? तो क्लास की बंक करती है भाई. Why do you bunk classes? I'm telling you, nobody bunks the classes. Nobody misses any class because there is a continuous process. बीच में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. आपके पास V है. Can you write the equation of E? लिखो कितना? Tell me what is the value of EX minus AY. Okay, very good. ये हुई ना बात. And what is the value of EY? Imagine you have EX and EY. What is EX and EY? Electric field के दोनों components along X and now this is the component of electric field X and Y. तो अगर आपको EX और EY मालूम है, स्लोप मालूम है, तो क्या आप इक्वेशन बना सकते हैं कर्व की? यस, ये कैच था ना. अगर आपको स्लोप मालूम है, सो कैन वी फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स? कम ऑन, ट्राई. गिव अप नहीं करना. एक सेकंड के लिए भी गिव अप नहीं करना. एग्जामिनेशन के 3 आवर्स एंड देन 6 आवर्स, किसी भी मोमेंट गिव अप नहीं करना. ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसे ही रहेगा एग्जाम में. You would feel that you don't know nothing, but you need to keep trying. So keep trying. कैसे करते हैं? अगर EY EX पता तो क्या पता है? कैसे निकालेंगे? Very good. स्लोप का मतलब क्या होता है? dy by, tell me what is dy by dx in this case. मैं वेट कर रहा हूं. ये EY ये EX. हाँ, क्या लिखूं? जोर से बोलिए. माइनस upon minus. So what is this equal to? So what does this become? Y dy minus x dx equal to 0. Yes girls, ये क्या बन गया? किसका इक्वेशन है? सर्कल. हेलो, किसका इक्वेशन है? x इक्वल्स प्लस माइनस y. किसका इक्वेशन होता है? हाइपरबोला. यस और नो? क्या भाई है? हाँ या ना? हाँ, तो नींद में नहीं रहने का है, एकदम पूरा ताकत से करना है. हर चीज नहीं, सब कुछ याद होना चाहिए. व्हाट इज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट? इक्वेशन ऑफ अ. तो फटाफट करिए. अब आपको एक ऐसा हाइपरबोला बनाना है. क्या खास बात होगी उस हाइपरबोला की?
उस हाइपरबोला की खास बात यह होगी कि जब मैं उस पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उसका EX माइनस AX होगा और उसका EY माइनस AY। स्टार्ट करिए। इसके एसिम्पटोट्स कहां पर आ गए? X इक्वल्स प्लस माइनस Y बोलो। हाँ या ना? ये एसिम्पटोट्स बन गए ना? तो हाइपरबोला कैसे बनेगा? था ना अमेजिंग क्वेश्चन? This question is from I.E. Irdov, one of the best books for physics. ये उसका एक अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल है। अब आप में से मुझे ये बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी होगी, मुझे एरो भी दिखाना पड़ेगा, है ना? तो क्या एरो अगर इस क्वाड्रेंट की बात इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा? चॉइस 1, चॉइस 2। कैन एनीबडी टेल मी दिस? come on, use it, use your common sense। कैसे करते हैं? What do you do? Tell me one thing, आपके पास लाइंस है, टेंजेंट ड्रॉ करने से क्या मिलेगा? सुना नहीं मैंने? If I draw a tangent like this, what is this? EX, and this is what is the value of EX? माइनस AY। यहां पर Y पॉजिटिव है नेगेटिव है? सो अगर ये पॉजिटिव तो EX क्या होना चाहिए? और यहां पर EX क्या है? तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? वेरी गुड, करके दिखाओ। मजा आ गया ना? जल्दी करके दिखाओ, फटाफट फटाफट। अब सारे एरोस दिखाओ मुझे बना के, चारों क्वाड्रेंट के। शो मी द एरोस इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स। कॉन्फिडेंटली करके दिखाओ। अब जाके नॉर्मल हुआ, फीलिंग मच बेटर। हाँ यार, बहुत ही बुरा हाल हो गया था। प्लस 2 अब अच्छी सी चाय बना लो, फ्रेश। टिश्यू पेपर है अपने पास? टिश्यू पेपर मंगवा दो। दिखा 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 क्या कर रही है? सपोज मैंने कहा यार मुझे लगता है ये होना चाहिए, यहाँ तो डिसाइड हो गया ऐसे होंगे, तो भाई ये EX होगा और ये, तो जो यहाँ होगा वो यहाँ पर होगा ना। तो यहाँ का और यहाँ का XY तो कॉमन नहीं है, यहाँ पे यहाँ के XY कॉमन है, तो मतलब अगर ये ऐसे है तो ये कैसे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए ना, तभी माइनस होगा, है ना? अब सपोज इधर की बात कर रहे हैं, सपोज आई डिसाइड कि यार मेरा E ऐसे होगा तो 2 कंपोनेंट्स इधर आएंगे, राइट? यहाँ X नेगेटिव है तो Y पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ है। और यहाँ पर Y पॉजिटिव है तो X नेगेटिव होना चाहिए, हाँ है। थोड़ा जल्दी दिखा करो जी। किसने करके दिखाया? यहाँ क्या क्या बनेंगे? ये दोनों क्वाड्रेंट सेम ही है, तो जो यहाँ होगा वो यहाँ पर भी होगा। दिखा, अगर मैं इसको ऐसे ले लूं तो ये और ये होने चाहिए, ये होने चाहिए। ये मेरा EX है और ये मेरा, यहाँ पर मेरा X नेगेटिव है तो मेरा Y पॉजिटिव होना चाहिए, तो गलत हो गया ये। EX is minus AY and EY is minus AX। अगर तू इसको, यहाँ तो X पॉजिटिव है ना, तो अगर तू X को पॉजिटिव लेती EY क्या आना चाहिए? तो ये हो नहीं सकता, ऐसे होंगे।
डन? जी हाँ, बताइए, चलिए चेक करते हैं. लेट्स चेक आउट हियर. यू नो, इट इज नॉट अ क्वेश्चन, इट इज इटसेल्फ एन अ लर्निंग प्रोसेस. मतलब इसको करने से आपको बहुत सारी चीजें सीखने में मिलती है. जैसे सपोज आई टेक दिस डायरेक्शन, ये क्या होगा जी? आवाज नहीं आ रही है, जोर से, जोर से, आई नहीं रही. गिव मी अ फुल नॉइज. व्हाट इज दिस? एंड दिस इज? ऐसे बोला करो. आपने कभी नोटिस किया कि जब अब लोग लड़ाई करने जाते हैं वॉर पर, उतनी जोर से क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? वो मतलब दनाई की थोड़ी कोशिश कर रहे हैं अपने प्रतिद्वंदियों को. इट गिव्स यू खुद मोटिवेशन मिलता है. करके दिखाओ जरा एक बार, देखो कितना मजा आएगा. यस, लेट्स डू इट. व्हाट इज दिस? यहां पर एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो EY क्या होना चाहिए? है क्या? है. EX निकालते हैं. यहां Y पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो EX क्या होना चाहिए? है क्या? तो बस मतलब ये हो गया ना. बोलो जी हाँ कि ना. और यहां पर कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है? नहीं, ऊपर आ रहा है. चेक करें. दिस इज एक्स. क्या है यहां पर? तो EY क्या होना चाहिए? हो रहा है क्या? नहीं हो रहा. तो फिर हमको लाइंस कैसे बनानी पड़ेंगी? पक्का जी? अब आपका क्लियर है ना? नाउ यू आर वेरी क्लियर व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इज. क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में? क्या पता है आपको? कंजर्वेटिव. आवाज नहीं आ रही? हाँ. Then you know the relation between electric field and potential? Yes or no? You know from E to V, V to E, V से इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्सेस बनाना. यही वही क्वेश्चन था ना. पागल से क्यों जाता एकदम? अभी तो कराया मैंने. V टू इलेक्ट्रिक हमेशा एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन पता क्या रहता है आपका? जैसे बहुत दुख भरी घटना चल रही है लाइफ में, यार हमें क्यों पढ़नी पड़ रही है फिजिक्स? 4 साल यही करना है. 4 years of engineering is only going to be physics. So if you love it, you like it, give me a smile. हंसते हंसते आगे चले, हंसते हंसते कट जाए. बस. कितना गंदे वाला डायलॉग था ना ये. हंसते हंसते कट जाए रास्ते. अभी आपको बहुत मजा आने वाला है. अभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट ही नहीं हुआ है यार. अभी तो सिर्फ आपको बैकग्राउंड करा रहा हूं. बैकग्राउंड. एक खेल और खेलते हैं. लेट्स प्ले अनदर गेम. दिस इज प्लस Q and this is minus Q, minus 2Q. Plot electric field lines. एक्सप्रेशन चेंज करते करो ना. जब मैं कोई क्वेश्चन बताता ना तो मुझे एक स्माइल दिया करो. वाओ, यस दैट्स मच बेटर. अब करो. You have to plot electric field lines for this charge distribution. Yes, guys. क्वेश्चन आ रहा है कुछ? क्या क्वेश्चन है? V into EX and EY. अभी तो बताया. I just now gave you a question. V is XY. आप करते रहो अपना काम. हाँ. And I told you that X component of electric field is minus del V by del X I cap. Now, when I say EX, del V by del X is a partial differential. That means Y is constant. So in this case, this will become minus A Y cap. Similarly, if I have to find out EY, it is minus del V by del Y J cap. That means X here is constant. So this will become
minus AX. So that means EX is minus AY, EY is minus AX. This is how you find the components of electric field from electric potential. Somebody was asking me the question. Yes, बना लिया ना आपने? I'm so happy. किस किसने बनाया? वो देख क्या बना के बैठी हुई है. नल पॉइंट्स नहीं बनाने, ये तो बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ. मैंने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ. वो देखो सारे सब के सब मूर्खों की फौज इकट्ठी हो गए. हम पूछते कुछ और है, जवाब कुछ और ही दे देते हो तुम लोग जी. अच्छा बाय द वे, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है मुझे खुद बता दो. मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? क्या प्लॉट करना है? और आप क्या प्लॉट कर रहे हो? वर्सेस एक्स ग्राफ. क्यों कर रहे हो जी? ये थोड़ी जो क्वेश्चन जो भी आएगा आंसर तो हमें ही आता है जी. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन दिस इज माय आंसर. दैट्स नॉट करेक्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको प्लॉट करनी है तो प्लीज वही पर प्लॉट करिए. वो बेचारी बना के बैठी हुई है. पता जब मैं क्यू माइनस क्यू ले लेता तब भी क्यू था. इसको माइनस क्यू माइनस 50 क्यू ले लो तब भी क्यू की लाइन डिफरेंट होगा ना कुछ. ट्राई करो. कुछ तो है इस क्वेश्चन में जो ये सब आपको परेशान कर रहा है. पेन दे बे. मुझे बता इसका नल पॉइंट कहां पर होगा? यहां यहां या यहां? पक्का? कैसे पता? पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पोटेंशियल निकाल रहा हूं. नेगेटिव नेगेटिव ऐसे बनेगा ग्राफ. यहां स्लोप 0 हो रही है ना, यहां नल पॉइंट होना चाहिए. इसका मतलब ये होगा ये प्लस क्यू और माइनस 2q में नल पॉइंट का यहां पर आ रहा है. अब पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव में जाती है. ये 2q है, मतलब डबल जाएंगी. वो डबल कैसे जाएंगी ये सोचना है. अच्छा टेल मी वन थिंग. एक बार एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा, कह रहा था एक बात बताओ आप, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, आई एम ड्रॉइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. आप जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं दिखा रहे हो, डज इट मीन ई यहां 0 है? नहीं है. तो फिर हाउ डू वी शो अ नल पॉइंट using electric field lines? If there are no lines, does not mean there is no null point. That means if I have to show a null point, by not showing the lines does not make any sense. Does not make any difference. तो मुझे null point दिखाने के लिए field lines कैसी बनानी पड़ेंगी, वो सोचने वाला बात है. How do I show a null point using field lines? अब बताओ क्या करोगे? लाइंस को, हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? इंटरसेक्ट तो ये जीवन में कभी कर नहीं पाएंगी. मरणोपरांत अगर ये हो जाए तो मुझे नहीं पता. मेरे जीवन में तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस कर जाएं. क्या मां डॉटेड लाइंस जहां जहां समझ में नहीं है डॉटेड डाल दो. ऐसे थोड़ी ना होता है जी.
अच्छा काम करो, एक पहले बेसिक वाला क्वेश्चन करते हैं. 2 पॉजिटिव चार्जेस लो, टेक जस्ट 2 पॉजिटिव चार्जेस, प्लस क्यू, जल्दी करो, जल्दी जल्दी. मुझे पता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने रट्टे मारे हुए, बनाना जरा इसकी. गर्ल्स एक बात अच्छे से समझ लो, इस बार मेंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर आपका एक नंबर नहीं कटना चाहिए. इज दैट क्लियर? सो वी आर नॉट वर्किंग टू गेट क्वालिफाइड, वी आर वर्किंग सो दैट वी डोंट डू एनी स्टूपिड मिस्टेक. उसके लिए आपको अपना थिंकिंग प्रोसेस एक्टिवेट करना पड़ेगा. बताइए प्लस क्यू कैसे दिखाते हो? बनाना नहीं है, लाइंस दिखानी है. प्लस क्यू बना दिया, लाइंस तो दिखा. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखाओगे? दिखा दिखा. भगवान, प्लस सामने भी तो रखा है. तुमको बाकी टीचर्स डांटते कि नहीं डांटते? वो डांट पड़ती है कि नहीं पड़ती है? नहीं ना, लग रहा है सही. क्या पिटाई नहीं तेरी आज बारों में? सर्कुलर लाइंस निकलती हैं. ओके, कैसे होना चाहिए? ऐसे दिखाते हो ना. इस रीजन में क्या होगा? नल पॉइंट. तो जब नल पॉइंट आता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखाते हो? जैसे कि वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है. नल पॉइंट पर लाइन होना या ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा, बट एट द नल पॉइंट योर फील्ड लाइन शुड स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर. नाउ टेकिंग दिस एज द कॉन्सेप्ट, अब आप ड्रॉ करने की कोशिश करो. प्लस क्यू माइनस 2q. दो चीजें होंगी इसमें बच्चों. पहली, अगर q से x लाइंस निकलेंगी तो 2q के ऊपर 2x लाइंस आएंगी. एग्री? q और 2q का जो बेसिक डिफरेंस है कि अगर प्लस q से लाइंस ओरिजिनेट करेंगी और माइनस में आके टर्मिनेट करेंगी. सो दैट मींस x लाइंस q से स्टार्ट हुआ एंड 2x लाइंस फाइनली एंटर्ड, टर्मिनेटेड एट -2q. कैसे बनेगा वो? और साथ साथ इन दोनों के बीच में एक नल पॉइंट भी होगा या नहीं? नल पॉइंट कहां पर होगा? वेयर विल द नल पॉइंट बी? एंड हाउ विल यू शो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेयर देयर इज अ नल पॉइंट? लंबू कर. A.B. de Villiers. Yes, he was awarded 2015. कितना इंटरेस्टिंग होता है ना. अच्छा, first of all tell me, where would the null point lie? अब 3 रीजन्स हो सकते हैं. Either it lies in this region, or it lies in this region, or it lies in this region. Where is the null point? तरीका बताया था मैंने आपको कुछ. क्या बताया था?
how to find null point from electric potential. याद करो. This charges, so it will be plus plus. This will be minus minus. Yes or no? The total charge is negative, so it will be negative here and negative here. So it will be something like this. It's going to be something like this, and this is going to be something like this. Do you agree? So where is the slope 0? So here we have that's step number 1. The null point is here. Now, with this understanding that when I know where the null point is, and with the knowledge that at null point, what do? You show as if the lines are repelling each other. Start करें. I'm trying to draw an approximate graph. Lines. अब देखना. मैंने बोला ये -2 क्यूब है. हाँ है ना? That means if x lines originate, यहां पर कितनी लाइंस आनी चाहिए? कितनी लाइंस मैंने यहां से कितनी ओरिजिनेट करी? सपोज ये करी, ये आ गया, ये आ गया. अब मुझे दुगना लाइंस इधर दिखाना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो दूसरा लाइन कहां से आएगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें क्या लगेगा? यहां से लाइंस आ रही है, और यहां पर क्या हुआ? तो नल पॉइंट पर क्या हो गया? ये आया समझ में? देख, ये -2 क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है. यहां से 2 निकली लाइंस, दोनों आ गई, लेकिन यहां 4 आनी चाहिए. तो 2 और कहां से आएगी? आएंगे तो यहीं से ना. बट द पॉइंट इज यहां पर ऑलरेडी क्या है? तो होगा क्या? ये लाइंस आ तो प्लस की क्यू से रही है ना, ओरिजिनेट तो यहीं से हो रही है ना एक तरह से. तो होगा कि जब ये लाइंस आएंगी तो जहां नल पॉइंट होगा ये बल्ज करेंगी और फिर नेगेटिव चार्ज के पास आके. दिस रिपल्शन टेल्स यू that there is a null point here. Is that clear? मजा आया? Did you enjoy it? तो थोड़ा सा ये ठीक है. अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. टॉपिक मतलब सब टॉपिक लिखना. The lot of questions which have been asked on this topic also, which I'm going to tell you now, is they ask you find the locus of a zero potential. I'll tell you what it means. Suppose they tell you that this is origin, and I've placed a negative 2q charge here, and there is another charge q here plus, say at a distance L, 0. Both the charges are on the x-axis. Now the question is, find the locus of the points where electric potential is 0. पहले क्वेश्चन लिख लो. समझ में आया? फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्ब द क्वेश्चन. क्या बोला मैंने? जोर से आवाज. फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज
What he means to say is, there is not just a single point on which electric potential is zero. There are multiple points, and if I connect those multiple points, there will be a curve, and that curve will be the locus of zero potential. So we have to first identify where potentials could be zero, and then try to trace it out. Try karo. I should tell you one thing. Suppose I take this as my origin. I mean, if I have to find locus, I have to find equation, then I have to also locate where my origin is. इसको मैं x-axis ले लूं और ये लेते हैं y-axis. Now suppose I take a point here and call it x comma y. इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? ये डिस्टेंस r1 ले लेता हूं, ये डिस्टेंस r2 ले लेता हूं. ठीक है. What is the potential at point P due to this charge? What is the potential due to this? This should be equal to, ये क्या आ गया? क्या आ गया? क्या हुआ? ठीक है ना? So you proved that R1 is 2 times R2. How can you find R1 from here? बहुत मुश्किल है. क्या लिखो? And what is R2? क्या आ गया? बोलते रहो. Can you open the brackets and tell me what this equation represents? Come on, do it, move it fast. क्या रहा है? अभी तो हो गया ना ये?
कितना आ रहा है? सॉल्व हो जाएगा ना? यस और नो? क्या आ रहा है? what would this equation represent? Equation of a है ना? अब एक क्वेश्चन लेता हूं जिससे आप एग्जैक्ट इक्वेशन बना भी सकते हो. This question came in IIT JEE. You know, okay? Let's see the situation. This is minus 3a comma 0. And this coordinate is 3a comma 0. But now, I'm placing a minus 2q charge here and a plus q charge here. Find the locus of the points or find the locus of zero potential surface. Find the locus of zero potential surface. Question आ रहा है, पूछना क्या है? What are 2 points? Minus 2q is located at minus 3a comma 0 on the x-axis, and this is located at 3a comma 0. पागल हो तो क्या लिखा r1 equals to 2r2. r1 की वैल्यू क्या है? x square plus y square. r2 भी यहाँ निकल के अगर इन दोनों को तो इक्वेट करेगी तो x और y में रिलेशन आएगा, इक्वेशन आएगी, वही तो हुआ लोकस है. तो l तो कांस्टेंट रहेगा पे कुर्सी हैमिल्टन ना हो तो भाई जैसे कुछ ही आएगा x minus a का होल स्क्वायर प्लस y minus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. कांस्टेंट तो जीवन में लेना ही पड़ेगा. हूँ क्या हूँ? इसका शॉर्टकट चलो आपको एक शॉर्टकट बताते हैं. आओ थोड़ा सा. I mean, I don't like solving problems of physics by maths. Instead, by some common sense. करके देखें एक बार और दोबारा. Tell me one thing. Suppose I take a point P here. अभी जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से K times बोलते रहो. Okay.
Yes, girls, do you agree? What is R1 equals? ध्यान से देखते रहना. R1 डिस्टेंस है यहां से उस पॉइंट का, और R2 डिस्टेंस है यहां से इस पॉइंट का. ऐसा नहीं लग रहा आपको कि टोटल लेंथ कितनी है? और मुझे किस रेशियो में डिवाइड करना है इसको? If I ask you that this total length is 6a and divide this length in the ratio of 1:2, तो मेरा पहला पॉइंट कहां पर आएगा? कहां पर आएगा? I'm asking you divide 6a in the ratio of 1:2. 2a मतलब कहां पर? कोई बताएगा आगे मुझको? कम आओ बोर्ड पर आओ. Come, right? I want you to divide this length 6a in the ratio of 1:2 internally and externally. अब प्लॉट करके दिखाओ. वो पॉइंट इंटरनली कहां पर होगा? How do I divide the length 6a into the ratio? गलत लिखा ना, 2:1. R1 is 2 times R2. You have to divide the length 6a into in the ratio of 2:1. कहां पर आएगा? प्लस. वेरी गुड. एक पॉइंट यहां पर आएगा, a कॉमा. ना अभी आपने 6a को 2:1 का रेशियो में इंटरनली डिवाइड किया. अब जरा इसको एक्सटर्नली डिवाइड करना. फिर मुझे बताओ दूसरा पॉइंट कोऑर्डिनेट कहां पर आ रहा है? आता है एक्सटर्नल डिवीजन करना? बताओ. माय क्वेश्चन इज सिंपल. डिवाइड दिस 6a internally in the ratio of 2:1 and find the coordinate. वो आपने निकाल लिया, a, 0. And externally in the ratio of 2:1, where will the second coordinate lie? इतना देर. Yes. Where is the second coordinate of the x-axis? लग रही है यार. 5 कहां से? ये नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 9a, 0 आ रहा है. आ रहा है. यस. एक्सटर्नल डिवीजन इतना टाइम क्यों लग रहा है? आप में से कितने लोगों को आता है एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन करना? डन? पक्का? अब देखो, आई डोंट नो व्हाई यू टुक सो मच ऑफ टाइम इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन. आई थॉट दिस कुड बी वेरी सिंपल. अभी क्लियर है? पहला कोऑर्डिनेट किधर आ रहा है? दूसरा कोऑर्डिनेट कहां आ रहा है? ये डिस्टेंस कितना हुआ? 8a. इसका सेंटर कहां पर आएगा? और ये दोनों पॉइंट्स कैसे लाई करेंगे? पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर. ये सर्कल ऐसे नहीं बनेगा. नहीं समझ में आया? I told you इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं. बोलो हाँ या ना? ऑलवेज R1 विल बी. सो मैं और कहीं पॉइंट्स लोकेट ही नहीं कर रहा हूं. दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस ही ले लिया. भाई जो सर्कल बनेगा वो एक्स एक्सिस को कट करेगा. एंड वेरेवर दिस सर्कल कट्स द एक्स एक्सिस, व्हिच मींस पोटेंशियल इज 0. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दिस टोटल लेंथ has to be divided in the ratio 2:1. तो 1 पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर आता है और दूसरा पॉइंट. तो इसका मतलब जो सर्कल है वो यहां से भी पास करेगा, यहां से भी पास करेगा.
और ये डायमीटर होगा, तो if the length of the diameter is 8a, where the center would be 4a, and what would be the radius? कितना? 5a हुआ ना? नहीं समझे? सेंटर 4a, 0 हुआ ना? तो कितना हुआ अपना रेडियस? हाँ है ना? तो इसका इक्वेशन क्या होगा? लिख के दिखाओ, इक्वेशन क्या बनेगा? ये 5a होगा ना? एक बात बताओ, ये टोटल लेंथ कितनी है? 8a, ठीक है। सेंटर कहां पर होना चाहिए? 4a। कहां से? यहां से ना? तो ये भी तो ऐड करोगे, कितना होगा? तो ये रेडियस कितना हुआ? 4a। रेडियस कितना हुआ? सो रेडियस इज 4a एंड द सेंटर कोऑर्डिनेट्स आर, तो व्हाट विल बी द इक्वेशन? x माइनस प्लस y माइनस इज इक्वल टू, कैसा लगा? यू कुड सेव सो मच ऑफ टाइम। नहीं तो आप इक्वेशन लिखते, फिर उसको इन ब्रैकेट खोलते करते, कितना सिंपल हो गया। तो याद रखना, प्लीज अंडरस्टैंड दैट व्हेनेवर यू हैव प्रॉब्लम्स ऑन जीरो पोटेंशियल, फाइंड द रेशियो, फाइंड इंटरनल एक्सटर्नल डिविजन, सर्कल बनेगा, सेंटर रेडियस आ गया, इक्वेशन बन गया। परफेक्ट। क्लियर? ठीक है। नाउ आई वांट टू मूव ऑन टू कंडक्टर्स। ठीक है, एक कंडक्टर लेता हूं, सॉलिड कंडक्टर, उसमें मैंने दो कैविटी बनाई है। R1, R2, ये सब मेटल है। बनाओ। यहां सेंटर पे चार्ज रखा मैंने Q1 पॉजिटिव, और यहां चार्ज रखा Q2। ये पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले Q1 रखते हैं, अभी कैविटी Q2 में चार्ज नहीं रखते। कैन यू टेल मी हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विल हैपन? ये Q1 सेंटर में रखा है। वेरी गुड। अंदर इट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना? What will be the impact on this cavity? Will something happen here? Why? इन दोनों के बीच में मेटल है. The electric lines of forces will not, starting from here, will never come here.
Yes or no? Because there is no field lines inside a conductor. So will this impact this cavity? No. Will this impact something here on this? Yes. Yes. Because in a conductor, the entire charge should reside on the outer surface. Banao, banao, banao. So can I say uniformly, if this shape is uniform, the entire charge will be uniformly distributed here? Likho. How to locate center of locus of circle in the previous question. आइयो ये करके दिखा जो मैंने अभी बताया लोकस कैसे निकालते हैं सर्कल का. जाओ बोर्ड पे बताओ लेफ्ट हैंड साइड पर तेरा क्वेश्चन डिस्क्राइब करना. इससे पहले वाला लिया था ना हमने क्वेश्चन. कोई एक स्टूडेंट ने डाउट पूछी है. आज ले जाओ. चार्जेस क्या लिए थे हमने? प्लस माइनस टू क्यू एंड करो करो करके दिखाओ. बोलते भी रहना. आप लोग करो. Internal and external ratios. या जोर से बोलो. हाँ. We divide this distance 6a in the ratio of 2:1. So how do you divide 6a into 2:1? Using section formula. करके दिखाओ. Very good. First point A comma 0. Very good. External Division. Very good. दोनों के बीच का सेंटर हो जाएगा 5a comma 0 and the radius is 4a. Excellent. बिल्कुल ठीक है. एक सर्कल बना दो. नीचे बना दो. चूहा सर्कल थोड़ी बनाएगी. नीचे बना देना. यहाँ पर एक सर्कल बना दे बस. वेरी गुड. एंड जस्ट शो द सेंटर. ये सेंटर हो गया. कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 5a comma 0. वेरी गुड. एंड द रेडियस इज. भाई कमाल है. अमेजिंग. वेल डन. वेल डन. वेरी गुड. एक्सेलेंट. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड. अच्छा अब एक बात बताओ. ये कैविटी में मैंने चार्ज प्लस Q1 रखा. इंड्यूस चार्ज हुआ माइनस Q1 और बाहर आ गया प्लस Q1. If he says that by placing this charge Q1 in the cavity,
has the electric potential in the cavity 2 increased or decreased? What would your answer be? बड़े शांत मन से सुनना. हमने एक चार्ज Q1 रखा कैविटी में. We place the charge Q1 in the cavity. My first question was, if there is charge Q1 in cavity 1, will it affect the electric field in cavity 2? You said no. Very clear? Now my second question is, if I placed a charge Q1 in cavity 1, will it increase or decrease or will not change any potential in cavity 2? What would your answer be? A conductor is an equipotential surface. That means potential everywhere is. बड़े ध्यान सुनना मेरी बात. When this charge Q1 has finally gone outside on the outermost surface, the total charge on the outermost surface is plus Q1, which means the electric potential of this whole system will be K Q1 by R, if R is the radius. मैं ये कह रहा हूं, अगर इस सेंटर से if I take this distance as R, इस पूरे स्फीयर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया? परफेक्ट. नाउ ये पूरा मेटल है. Inside a metal, electric field intensity is 0. That means there is no change in electric potential. तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. आया ना बात समझ में? तो अगर मैंने चार्ज यहां रखा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना हुआ ना, इंक्रीज हुआ तो उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पर भी होगा और इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. दैट मींस इस कैविटी की सरफेस, और आपको ये भी पता है, क्या पता है, कि जो इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम, जो सरफेस पर होता है वही. तो इस कैविटी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल इंक्रीज ऑन प्लेसिंग चार्ज Q1 इन द अदर कैविटी. नोट करिए इसको. Have I made myself very clear? ठीक है, perfect. अच्छा, if I place a charge Q2 here in the cavity 2 now, after placing a charge, will this charge have any effect here? No. Total charge कितना हो जाएगा बाहर? Now I'm placing a charge here. Will the potential of the cavity, the potential inside this cavity change? Yes, it will. ये एक थॉट मुझको आपको देना था कंडक्टर्स के अंदर, राइट? ओके. ऑल्सो इफ आई आस्क यू टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, कितना होगा? नॉट ई, ई जैसे क्वेश्चन बताता हूं आपको, द डिफरेंस बिटवीन ई एंड ई नेट. Say I take a conductor, a hollow conductor. This distance is R. This is capital R. It's a thin conductor. This charge is positive. Now my question is, what is the electric field produced by the induced charges at the center? लिख लो पहले question. I'm asking you, find electric field intensity due to the induced charges on the sphere at the center.
अच्छा ये बताओ, if I'm asking you find the electric field due to induced charges on the sphere, will the distribution of charge on the sphere be uniform or non-uniform? Non-uniform. Charge बाहर रखा है. The charge plus q is placed outside. जो surface इसकी close होगी और जो इसके दूर होगी, उसका charge distribution same होगा, different होगा? Different होगा. But ये बात पक्की है, because this is plus q, the surface which is close to this will have more negative charge, and the surface which is farther away will have more of positive charge. But the charge distribution will be non-uniform. And I am asking that what will be the electric field intensity due to this non-uniform distribution? Can we find it out? Will it be easily possible? It will be very, very difficult, because electric field A depends, it is a vector. So if the distribution of charge is different, so every vector will have a different length. Magnitude भी different होगा क्योंकि charge अलग है, और direction होने की वजह से उसका direction भी अलग होगा. So it will be very, very difficult. But a conductor has a very interesting property. You know what the property is? That if there is no charge inside the conductor, if there is no charge, then electric field intensity, and not electric field intensity, the net electric field intensity due to all the charges is 0. Now, कौन-कौन से charges हैं? एक plus q है, एक जो यहां charges induce होंगे, मान लेता हूं वो q induced है. Since it's a conductor and there is no charge inside, therefore the electric field intensity due to this charge and due to this charge, the sum of these two should be 0. क्या बोला मैंने? इसको जरा दोबारा रिपीट करो. आवाज जोर से. The electric field intensity due to the induced charge, charges, and should be पक्का. Up, I cannot find the field due to these charges because, as I told you, the charge distribution is non-uniform. Can I find the field due to this charge at this point? Yes, I can. कितना होगा? And this will be the direction, since it's a positive charge. And the net electric field here has to be, तो इसकी वजह से फील्ड इतना ही नहीं होगा इस डायरेक्शन में. लिखो. Interesting now? The electric field due to the charge which is placed outside, and because of the field, the field in due to this charge, induced charge, the net field in the center has to be 0. So जितना field ये produce करेगा, उतना field ये produce करेगा, equal and opposite. पक्का ना? याद रखना, it is not electric field, it is net electric field. Okay, now suppose I earth this conductor. What will be the value of induced charge? Zero. Will the induced charge be 0? It cannot be 0. Why? Because there is a charge which is present in the front. By plus q will induce a charge on this surface, and it will be both positive and negative जब मैंने इसको connect earth से नहीं किया. लेकिन जब मैं earth से connect कर दूंगा तो एक charge को move करने का मैंने path दे दिया. Now since this is a positive charge, so the negative will never leave. What will happen? This charge or this sphere will become completely negatively charged. Can we find that negative induced charge on the surface? Can you find it out? Can you try it out? Try karo. Can you find the value of
the net induced charge on the surface of this earth. Try that. ओके यहां का पोटेंशियल कितना है? ये जो टोटल इंड्यूस चार्ज है वो कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा यहां? And what will be the potential which this charge produces here? And this should be so what is the value of Q induced? I've already taken a negative sign here. Likho अर्थिंग का मतलब तो यही होता है ना. What do you mean by earthing? That potential becomes zero. कैसा लगा? Interesting? Yes. अब धीरे धीरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वार्मथ आ रही है. अभी तक हमने एक बेसिक सीबीएसई प्लस सीबीएसई लेवल, अब ये धीरे धीरे अब आप जेई वाले मोड में एंटर करना शुरू किया आपने. और खेलें? चलिए और खेलते हैं. This starts moving with velocity v. As I said, let's play the game of physics now. ठीक है? यहां से करंट कितना फ्लो करेगा? I know it looks horrible. This is the first proper question of the day. Proper question of the day. Abhi tak to we were having soup. Now let the main course start. And I know you can do it, girls. अच्छा एक बात बताओ, ये जैसे ही V आया और जैसे ही मैंने करंट की बात करी आप घबरा गए. I don't think you need to get scared. What will be this current I? dq by dt, the rate at which the induced charge changes with time is current, and the rate at which this charge moves towards that, which is dr by dt, is nothing but, can't you differentiate this function? If you differentiate this function, what will be dqi induced by dt? Current. वो क्या पूछ, वो current का क्या मतलब है? वो कह रहा है जो current है, what does it mean? It means the rate at which the induced charge is changing with time.
If I differentiate this function, it will be minus 1 by r square into dr by dt. Hi, Anna. What is dr by dt? V. And what is dq induced by dt? I. खत्म हो गया. Yeah, खत्म हो गया. Clear? थोड़ा stretch your हाँ मतलब एक होता खेलना, एक होता बिंदास खेलना, बिना डर के खेलना. किस बात का डर? Nothing to lose. See, if you study, if you do something good in life, you might not achieve the desired results, but you would achieve some better results. By students who are not studying the way we are studying, and the way you are studying definitely better than them. तो पॉजिटिव इंपैक्ट तो होगा ही ना. मेरे को इतने साल हो गए पढ़ाते हुए. I always believe in one thing. जैसा आपका मन होता है वैसे ही आपकी परफॉर्मेंस होती है. The way you feel about yourself is how you behave in society. आप जब किसी पर नाराज होते हो ना तो आप बेसिकली अपने से नाराज होते हो. आपकी जब परफॉर्मेंस खराब होती है ना, इसका मतलब कुछ अंदर गड़बड़ चल रही है. जब तक फाउंडेशन करेक्ट नहीं करेंगे हम, जब तक हम फाउंडेशन पे प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे, ये सुपरफिशियली चीजें होंगी नहीं. इफ आई टेक अ बुक इन माई हैंड एंड आई रीड इट and I do it every day, I do it for 8 hours, 10 hours, it's not going to make much of difference. आप चाहे 1 घंटा पढ़ रहे हो लेकिन completely determined, committed और enjoy करके पढ़ रहे हो. I always ask this question to my students. Do you remember the scene of PK or a movie? Word by word. And when I tell them what did we do in the last class, मेरी क्लास को फिर भी वो याद रखते हैं. कोई याद ही नहीं होता क्या पढ़ा है. क्यों? इंटरेस्ट लेके पढ़ा ही नहीं, मजा ही नहीं आया. ये क्वेश्चन यू कुड हैव डन इट इजीली प्रोवाइडेड आप थोड़ा सा इसको देखते. यार ये तो ठीक तो है. करंट का मतलब क्या है? अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ हो जाएगा सर. कैन बी डन. हाँ या ना? परफेक्ट ना? और करेंगे? चलिए और खेलते हैं. लेट्स प्ले द गेम ऑफ फिजिक्स. अभी तो बहुत कुछ करने का मेरा मन था इस क्वेश्चन में, मैंने अभी किया नहीं. मेरा मन था एक स्फेयर के अंदर एक चार्ज रख दूं, एक चार्ज बाहर भी रख दूं, फिर क्या होगा. अभी तक तो आप बोल रहे थे कि क्वेश्चन को सॉल्व करना वाज इजी. व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर वाज. बट इफ आई प्लेस अ चार्ज इनसाइड, the electric field will not be zero. Then what do you do? Very interesting. एक चीज रह गई तुमको बताना, वो था रावण वाली हंसी थी ना. या I can hear the sound of air conditioners and not yours. सांस तो लेते रहो यार. ये तुम कैसे सॉल्व करते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल, edge length is A. And alternate charges are opposite side. Like if this is Q, this is minus Q. इसका total potential energy लिखना. Find the total potential energy of the system. Electric potential energy of the system.
जी, now I'll tell you a good method to आप लोग कैसे करते हो? एक तरीका सिखाऊं आपको, एक इंटरेस्टिंग तरीका. सपोज ये पॉजिटिव चार्ज होते सारे, फिर नेगेटिव भी ले लेंगे बाद में. Do you realize that all of them are identical? All charges are identical. Now, there are two types of energies. One is self energy, and the other is interaction energy. I'm talking about electric potential energy. दो components होते हैं उसके, एक self energy और एक interaction energy. Self energy, interaction energy. Now, self energy of a point charge is zero. ये नोट करते जाओ चीजें. Self energy of a point charge is zero. ठीक है? Now let me explain you why self energy. That self is a question. That why do we take self energy of a point charge to be zero? अब एक बात बताओ. See, whenever I say energy, it is never energy. It is change in energy. है ना? अगर मैं आपसे बोल रहा हूं इस पेन का एनर्जी 10 जूल है, तो ये किसी के रिलेटिव 10 है ना. Energy is always change because energy comes from work done, and work done comes from change of position. So you can never say the potential energy. Suppose मैंने बोला आपसे कि first orbit of Bohr's model, the energy is minus 13.6 volts. It's irrelevant. It's only when the energy at infinity is zero. If I change the energy of infinity, the energy of the first shell will change. That means potential energy is always relative. So when I'm saying self energy, I'm actually talking about self change in energy from one state to the other. What does it mean? Now, for example, I take a point charge, a plus point charge, and I want to know इसकी अपनी एनर्जी कितनी है. तो ये जब तक अकेले है, जब तक ये आइसोलेटेड है, तो इंफिनिटी से यहां तक लाने में इसको तो वर्क डन जीरो ही करना पड़ेगा ना. See, work done is only possible when there is resistance. Who offers resistance? There is no other charge which can actually offer resistance. So what will be the energy of a point charge? Zero. Perfect. Right. Secondly, now a point charge can definitely have interaction energy. Obviously, अगर इसके साथ में एक और चार्ज क्यों रख दूं, तो इस चार्ज को यहां से लाना, यहां से लाने मुझे वर्क डन करना पड़ेगा. Why? Because there are two charges involved. मतलब इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मैं इसको मूव करूंगा तो वर्क डन होगा ना. Yes or no? Now, how do you define interaction energy of a single charge? Like for example, मुझे इस चार्ज की interaction energy लिखनी है. सुनना, इसकी एनर्जी होगी हाफ मेरा चार्ज, which is Q. That's my charge because I'm talking about my self energy. Interaction energy into तेरा potential. How stupid. Yeah, तेरा पोटेंशियल. इंटरैक्ट का मतलब क्या? तू और मैं. ये याद करने का तरीका बाय द वे. सो इट्स हाफ क्यू. लेट्स स्टार्ट विद द तेरा पोटेंशियल. तेरा डजंट मीन 13, दूसरे वाले. अब मुझे बताओ बाकी कौन कौन से चार्जेस जो उसके साथ इंटरैक्ट करेंगे. ये करेगा? अभी हाई बोल दिया करो. थैंक यू. ये करेगा? ये भी करेगा? तीनों के डिस्टेंसेस सेम है, तो क्या लिखूं? प्लस तीन चार्जेस ये भी हैं, एक, दो, तीन. इन सबके डिस्टेंस कितने हैं? सो दिस इज के क्यू बाय इनटू, और एक बच गया फाइनली के क्यू बाय. ये कितने, ये किस चार्ज का एनर्जी है? इसका. And how many similar charges are like this? 8. तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ये हो गया इसका सारा एनर्जी. लिखो. तो हाफ मेरा चार्ज इनटू तेरा पोटेंशियल is interaction energy. So it's half
charge into potential created by the rest of the charges. And the rest of the charges are like this. Was? Oh, okay. अभी क्लियर? मजा आ गया? अच्छा, अब वो खेलते हैं. This becomes negative. This becomes negative. 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 Yeah. So alternate charges are negative. Let's see what difference does it make. कौन हेल्प करेगा मेरा? चलिए इस चार्ज को पकड़ लेते हैं. तीनों नेगेटिव है ना? ये और वो yes or no? Into done. This is what we do when we deal with point charges. I told you that the self energy is going to be zero and interaction energy can be found out by this way. ठीक है ना? Perfect. Now suppose I deal with a conductor. Center है ये. And it doesn't look like very symmetrical, but you can assume it to be symmetrical. And the radius is r, and the charge is q. Again, there are two energies, self and interaction. अब एक ही चार्ज है तो ये इंटरैक्ट तो नहीं करेगा, तो उसकी क्या होगी यहां पर? इंटरैक्शन मैंने क्या फॉर्मूला बताया? हाफ मेरा तेरा, और सेल्फ में मेरा क्या? हाफ मेरा चार्ज इनटू मेरा पोटेंशियल. देखो she says, what is the significance of mera and tera? How interesting. Young girl, this is a way to, for you can remember this easily. It's not called mera tera. It's like when we are dealing with one single charge, we say mera. And when we deal with two charges, then we say mera tera. कहानी वैसे शुरू होती है, तो मैं ही हूं. गॉड भगवानों में नहीं होता ना मेरा तेरा, इंसानों में होता है मेरा तेरा. ठीक है नहीं? सेल्फ एनर्जी इज डन. आइए और खेलते हैं. ये फिर एक सर्कल जैसा ही है. Assume this to be a circle. Q1, Q2, R1, R2. टोटल एनर्जी निकालना, सेल्फ एनर्जी और इंटरैक्शन एनर्जी दोनों बताना, इसी जीवन में बताना. इसको सरफेस 1 ले लेते हैं, इसको सरफेस 2. चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, सेल्फ एनर्जी 1 बोलो. हाफ. ओ फैंटास्टिक. S2. ओ गुड. ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए? इंटरैक्शन. सो वो मेरा तेरा का जवाब आएगा. अब सो इंटरैक्शन लिखते हैं. हाफ Q1. What will be tera potential? What would be the potential which Q2 has at Q1? Okay. R तो कोई है ही नहीं, या तो R1 R2, तो पागल मत बना मेरा. क्या लिखूं? R1 और R2? पक्का?
बिकॉज जो पोटेंशियल यहां पर होगा सरफेस पे वही पोटेंशियल पूरा अंदर तक होगा. तो Q2 का पोटेंशियल at this point will be KQ2 by R2 and the same potential will be here. So we are taking. हाँ या ना? Now the best part about interaction is कि जितना interact मैं आपसे करूंगा interact आप मुझसे करोगे. So total interaction energy will be into. तो आप इन सब कुछ खानदान को जोड़ दीजिए, ये पूरे खानदान का एनर्जी आ गया. सेल्फ इंटरेक्शन, एक का निकालो इंटरेक्शन, multiplied by 2, you get the answer. So what I meant was tera was when we are dealing with two different charges. हूं तो हूं. ओके, और खेलेंगे, चलो और खेलते हैं. सी जब आप बोलते हो ना आओ पढ़ें, बड़ा खुद को ही लगता है ओ गॉड क्या करने जा रहे हैं. आओ खेलें, मच बेटर. खेलें या पढ़ें? खेलते. आओ खेलें फिजिक्स. ये मैंने एक गोलाकार वस्तु बनाई है. ओ गॉड, ठीक है. इट्स अ थिन कंडक्टिंग शेल. I've placed a charge Q at the center and the radius is R. It's a neutral conducting shell. I didn't have any charge. I placed a charge at the center. What is the total energy of the system? What is the total energy of the system? Hello, video breaking. टोटल एनर्जी निकालना हमारा. वो क्या लिखा था मैंने इससे पहले? क्या लिखा था? रूट तो कुछ था ही नहीं यार. हाँ? ये कह रही है इंटरैक्शन किससे होगा? चार्ज इंड्यूस होता कि नहीं होता? तो जब होता तो इंटरैक्शन होता. सी, इसका सेल्फ होता? इल्ले नहीं होता. फाइन चार्ज का सेल्फ नहीं होना. अभी क्या प्रोड्यूस होना इधर? नेगेटिव चार्ज. इसका बाहर क्या होना? पॉजिटिव चार्ज. इधर नेगेटिव होता, इधर पॉजिटिव होता. टोटल चार्ज कितना होता? 0. इसका सेल्फ एनर्जी होता? इल्ले नहीं होता. इसका इंटरेक्शन होता? इसका इंटरेक्शन होता. सो जितना नेगेटिव होता उतना ही पॉजिटिव होता. तो टोटल इंटरेक्शन कितना होता? खानदान पूरा 0. तो इस पूरा खानदान का टोटल एनर्जी 0 होता. समझ में आया? बड़ी खुशी की बात है. नहीं आया तो अब मैं आपको इसको दूसरे मेथड से समझाता हूं, which is more intuitive. If I ask you कि it's a conducting shell, neutral, plot electric field lines, तो आप कैसे प्लॉट करोगे? मुझे करना है, बोल देख रहे हो सर, इस जीवन में सब कुछ काम आप ही को करना है. राइट लंबू? ये बन गए लाइन्स. ऐसे होगा ना? बोलो कम से कम हाँ बोल दिया करो ना. अच्छा ऐसा लगता है अंदर से, ऐसा लगता है कि जीवन में हम भी जिंदा है. ठीक है. अब मैंने बोला ये बहुत थिन शेल है. So the lines of forces I will not be continuous, it will be like this.
Yes or no? It looks as if all these lines are radially coming from outside. Up. When I say what is the total energy of the system, what I mean is the amount of work done in bringing this charge from infinity to this point. Yes or no? और जो वर्क डन होगा वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक? या फिर जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो वर्क डन के बराबर होगा? बोलो हाँ या ना? यस और नो? नाउ टेल मी वन थिंग, इंफिनिटी पर जब ये पॉइंट चार्ज रखा होगा तो लाइंस कैसे निकल रही होंगी इसमें से? यस और नो? यस. एंड व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द सिस्टम at infinity? And what is the direction? How do you find the lines like this? अब जरा इधर देखना, इसको भूल जाओ. इसमें कोई फर्क लग रहा है आपको? Do you find any difference between the lines of forces here and here? So if this was 0, even this should be 0. So the amount of work done from here to here is, so therefore the change in potential energy is, so इधर इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होता तो इतना इधर कितना होता? लिखता, खत्म होता. समझ में आता? अभी समझ में आता? Very good. So what I'm saying is you can actually find out changes in energy by seeing or by looking at the change in the field line pattern. अगर field lines के pattern में कोई change नहीं है तो कोई energy में change ही नहीं है. Why? Because how do you define energy from field lines? बता सकता है कोई? What is the value? Half epsilon naught. याद है ना? It's the energy. So you can actually find out the energy through electric field lines. So if there is no change in the pattern of electric field lines, that means there is no change in. पक्की बात समझ में आती है? Right? Now, on the basis of this thing which you have learned, there is another problem in Irdov. Let's see. How can we solve it? What is the question? Instead of a thin conducting shell, it's slightly thick conducting shell. This radius is R1 and this radius is R2. ठीक है? अभी क्या इधर छोटा सा कट होता, स्मॉल कट. अभी क्या बोलता वो कि इधर चार्ज क्यू होता प्लस क्यू. How much work would be done in taking this charge plus q from the center through this opening to infinity? It is not a thin shell anymore, it's a thick shell. He says, what is the amount of work done in charge from q? Now the solutions given in the book is almost half a page or 1 page. But if you understood what I've taught you, थिन कंडक्टिंग शेल में जो बताया मैंने आपको, अगर आप उस लॉजिक को लगाते हो तो ये क्वेश्चन लेस देन अ मिनट का है. ये 2 लाइन में खत्म हो जाएगा. I told you that the work done is actually change in energy or the change in energy from the change in feed lines from infinity and at this point. When it was thin, it was almost same. Now it is thick. That means it will not be same. There will be a change. And why is that change? That change is because the energy which is stored here. आपको बात समझ में आ रही है? भाई मेरी बात सुनो, अगर मैं इसको खींच के यहां ले जाऊं तो ये थिन बन गया ना, तो एनर्जी चेंज कितना था? 0. अगर मैं इसको पुल करके इधर ले आऊं, if I pull it here, that means I'm creating some space where energy can be stored. So if somebody says what is the work done in taking a charge from this point to this point, my girls, this is the answer. जितना एनर्जी इस रीजन में स्टोर होगा वही चेंज प्रोड्यूस करेगा ना, हाँ या ना?
Now, how do you solve it? You write half epsilon naught. What is the value of E? K Q by, say, x square. Bolo hai na? Ka 4 pi R12 finished. आया ना बात समझ में? What I'm trying to say that जितना इस रीजन में एनर्जी स्टोर होगा वही एनर्जी का डिफरेंस भी होगा, क्योंकि अगर ये थिन होता, if it had been thin, there wouldn't have been any change in energy. So whatever the energy changes are is because the energy is stored in this element. So that is the difference of energy. Welcome, Naveen sir. Right? Are we clear? Interesting now? Clear? Now coming back to conductors. I'll take a sheet. I'll take two sheets. This sheet is conducting and this sheet is non-conducting. I want you to tell me what is the electric field intensity at the point P. Now my question is it same or different? Is the field due to a conducting and a non-conducting sheet same or different? आपने पढ़ा है ना? क्या पढ़ा है? बताना क्या था? Sigma upon, बोलो बोलो. Sigma upon 2 epsilon naught here and here. I don't know whether this is correct or not. We'll find it out. But one thing I'm not able to understand, students, is a student asked me this question. So you have a conducting or you had a non. By the way, do you understand the difference between a conducting and a non-conducting sheet? Like I'll explain you. Suppose this hand is a conductor. It's my hand is a conductor, and I say this is a conductor, which means the charge is either here or at my back. But if I say this is non-conducting, then charge is like blood inside my hand. It's inside, it's outside, it's everywhere. Because now when I say it's non-conducting, it means this hand is actually made by charge. ये चार्ज से बना हाथ है, कोई surface नहीं है, ये सब कुछ charged है. But when I say conductor, then I definitely define two surfaces, this surface and this surface, and I know in a conductor charge only resides on the surface. That means in case of a conductor, I'm dealing with two surfaces. In case of a non-conductor, I'm dealing just with. अब एक स्टूडेंट कहता है सर चार्ज आप कंडक्टर को दो या नॉन कंडक्टर को दो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही होना चाहिए. इसको देख के तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है. Let's understand that what is wrong in this. Now let me assume that the total charge here is Q and here is also Q. कंडक्टिंग शीट है या नॉन कंडक्टिंग शीट है, बड़ा ध्यान सुनना ये अगले 5 मिनट के अंदर. मान लेता हूं दोनों Q है, both are Q, and I want to find out electric field intensity. Suppose I want to find out that this sheet, whether it is conducting or non-conducting, I want to find electric field intensity. तो मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि ये एक प्लेनर सरफेस है, तो इसका गॉसियन सरफेस could be a cuboid. It encloses it. It is symmetrical. तो मैंने क्या किया, एक वॉल चार्ज Q की बीच में इंसर्ट कर दी. ठीक, पक्का? फील्ड लाइंस इधर से जाएंगी, फील्ड लाइंस इधर से जाएंगी. तो दैट मींस देयर आर ओनली टू डायरेक्शंस इन व्हिच फील्ड लाइंस मूव. तो क्या लिखोगे? E. ये होता है ना फॉर्मूला, E ds is, so it will be E into, and that will be Q by, so what is E equal to?
You agree? I haven't mentioned whether it is conducting or non-conducting. I'm saying a sheet of charge Q should produce this electric field. Yes or no? Now I'll tell you what the difference is. I said in case of conducting, you have two surfaces. How many? Two surfaces. So that means if I were to define charge density here, in a non-conducting, it is a single surface. So if I define sigma, this will be. Are these two sigmas same? This is. Which means this, मैंने क्या लिखा था? Q is 2a. So if I talk about conducting, then Q by 2a is sigma 1. So this should be. If I'm talking about a non-conducting sheet, then it is Q by A. So this should be. They look different, don't they? But they are same because sigma is different. In books it is written that sigma is same, so therefore E is different. Now my contention is, how can E be different if they have same charge? So if they have same charge Q, E has to be same. It is sigma which is different. In this case, this is sigma 1. Aaya na samajh mein? Likho. So it is not E which is different. It is sigma which is different, which makes E same. So आपके लिए electric field intensity किसी भी conducting sheet के लिए निकालना is like Q by 2a epsilon naught. Use this relation directly. Electric field due to a conducting or a non-conducting sheet is simply Q by 2a epsilon naught. Right? ठीक है? Now, ये चार्ज मैंने लिया प्लस Q, ये चार्ज लिया मैंने प्लस 3Q. Can you tell me what will be the distribution of charge on each surface? Difficult है. एक काम करते हैं. जो चार्ज सामने होगा, इधर होगा, उसका ऑपोजिट नेगेटिव इतना होगा. Do you agree? पक्का ना? ये चार्ज कितना रह जाएगा? And what about this charge? ठीक? I want to find the value of x. अब क्या हुआ? दो इंटरेस्टिंग थॉट्स देखना आप. पहली बात, very intelligently. Say if this is Q, this is 3Q. There are two experiments which happened. One was, आपने जब इसको पोटेंशियल को अर्थ किया या पोटेंशियल जीरो किया, कंडक्टर को अर्थ किया और पोटेंशियल जीरो किया, you know what happened? This charge became zero. Now people wondered why this has become zero. And this has not become zero. ध्यान सुन रहे हो मेरी बात? ये दो कंडक्टिंग शीट है, मैंने इसको अर्थ किया, इसका पोटेंशियल जीरो होगा, डेफिनेट है. बट ये चार्ज जीरो क्यों हुआ, ये समझ में नहीं आया. I'll give you the reason for this. What is the potential at infinity? And what is the potential here? So what is the work done in bringing a charge from here to here? What is work done equal to? Or it is work done equal to work done. And what is work done equal to? Electric field into the charge, into the distance, right? What is the electric field intensity? That means here? Zero. If the work done is zero, that means there is no electric field. और electric field produce कौन करता है? Charge. तो यहाँ का charge कितना हुआ? लिखो. This explains why the charge on the outer surface of a conductor would be zero. Because I'll explain again, repeat again. At infinity, the potential is zero. At this point, the potential is zero. That means there is no potential difference. There is no work done. That means there is no electric field. And you cannot have electric field if you don't have a charge. Therefore, the charge here should be zero. Okay? Now, interestingly, इसका जीरो होने का लॉजिक समझ में आता है. आप जानते हैं एक और चीज क्या होती है? चार्ज यहां भी जीरो हो जाता है. Now, this was surprising. It was surprising. Why? Because I connected this conductor to earth, so I'm giving them a passage. Charge को आने जाने का मैं रास्ता दे रहा हूं. So
because we've explained to you that this charge has to be zero. So हो सकता है इतना चार्ज फ्लो कर गया अर्थ में, बट ये जीरो कहां हुआ, ये क्यों जीरो हुआ? ये जीरो तभी हो सकता है, it is only possible that if both these plates are regarded as one plate and the total charge is 4q, and if I earth this becomes zero and this becomes zero. That means when I'm considering the field outside the plates, I can consider these two plates as, which means जब मैं field इधर का और इधर का बात करूंगा तो ये दोनों plates can be considered as one single plate. So this is zero, that means this is zero and this is zero. Do you agree? Now this charge was q here and has become zero, that means this q has come here. भाई ये चार्ज अगर जीरो हुआ है तो ये हवा में थोड़ी उड़ जाएगा, अंदर ही आएगा ना. अगर ये क्यू है तो ये कितना होगा, और ये पहले कितना था, इसका मतलब ऊपर कितना फ्लो किया, लिखो. See, if you've taken this as x and the total charge is q, so the charge here will be q minus x, no? And not q plus x. Perfect है. अभी फटाफट एक 2 मिनट में चीज बता रहा हूं, ध्यान सुनना. All the problems in HC Verma are based on plate system. इसको q लेता हूं, इसको 3q, इसको 2q. Right girls, are we ready? मैंने इसको अर्थ किया. स्टार्ट. यहां का चार्ज और कहां का जीरो होगा, बिकॉज व्हेन आई एम कंसीडरिंग दीज टू फील्ड्स, ये सारी प्लेट्स एक ही है. ये कितना है, सामने कितना आएगा, सामने कितना आएगा, यहां कितना आएगा, सामने कितना आएगा. सी दिस वाज q, हैज टू रिमेन q, तो ये जीरो तो यहां q आ गया. If this is q, this has to be minus q. If this has to be minus q, the total charge was 3q. So the total charge here will come. If this is plus 4q, this has to be. मजा आ गया ना. एक फाइनल सवाल और देखो फटाफट, जल्दी बोलो. ये कितना q, this is 3q, this is. अब मैं इसको अर्थ कर रहा हूं सेंटर वाली प्लेट को. शुरू करना. क्या लिखूं? I told you when I'm considering these two fields, all the plates can be considered as. So मैं इसको अर्थ करूं या इसको करूं या इसको करूं, बात तो कितना हुआ, ये कितना हुआ, कितना, सामने ये ना, ये अर्थ है, कितना भी चार्ज आ भी सकता है और जा भी सकता है. दिस टोटल चार्ज विल रिमेन 2q. सो दिस इज जीरो, दिस विल बिकम, सामने वाला क्या होना चाहिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई. लिखो. ठीक है. So we'll continue the next week on capacitances. Chalo. Thank you. Thank you very much. Any doubt? कुछ पूछना? या सभी क्लियर?
वो नहीं होता नेट चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम सो वेलोसिटी वाला पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होती है मुझे लगा है ही नहीं मैंने कहा इसका नाम है आकृति नाम तो है दो दिन रुकते हो और एक दिन अगली बार उसका अगली बार तो बिल्कुल पेपर अराउंड 2019 पोस्टपोन करके लेवल बढ़ाते जा रहे हैं पोस्टपोन करते जा रहे हैं फिजिक्स में कह रहे हैं अगर 20 गए तो वेव ऑप्टिक्स हमारे तो ऑप्टिक्स पे क्या है हमारे 14 भी जीरो ठीक है और केमिस्ट्री में डी ब्लॉक डी एफ ब्लॉक पूरी फर्स्ट बुक की होगी कोऑर्डिनेशन हो गया तो वो भी आ जाएगा और मैथ्स में ए ओ आई पर फर्स्ट बुक प्लस और क्या और कुछ रह गया सी एस में और उसका फाइनेंस है पहली पूरी बुक जो पहले यूपी में भी आई थी और दूसरी बुक का पहला था मेरे फाइनेंस में क्या पढ़ेंगे क्या नहीं रहेगा जो इंडिया में बना दो तो फिर पेपर कैसा होता है नहीं लेकिन 60 मार्क्स का पेपर बनाना था एक आगे मेरे 11 से फाइनेंस थ्योरी बहुत कम है सी एस में तो ज़्यादा मतलब लॉजिक है एक बार इसको आ गई तो प्रोग्रामिंग में लॉजिक लगता है सेकंड बुक को बहुत इजी जाके मैं कोई टफ सेटिंग में लगे वैसे दिमाग खराब होता तो फिर केमिस्ट्री दूसरी जाएंगे फिर हम तो बैठ जाएंगे वैसे कुछ चल नहीं रहा था वो और रजिस्टर थे कूद जाते और कुछ नहीं चलता आगे तो थोड़ा डिफरेंट चेंज मैंने वो करेक्ट पता निकाल दिया था वो उसको डिफरेंशिएट नहीं किया था कल वो बोल नहीं रहे थे कि कल प्रॉब्लम्स करेंगे ज़्यादातर आज ये वाले आ गए अच्छी बात है थोड़े से पढ़ा रहे थे नोट्स में वो पढ़ा नहीं रहे थे वो सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे थे मतलब पढ़ा रहे थे मुझे अच्छा पढ़ाया ठीक है क्वेश्चन भी ऐसे से पूछेंगे तो कभी अपने सोचा तो 73 के लिए कैसे आया अरे क्वेश्चन बोला ये समझ में आया था वो भी ये डबल तो सिंगल में अच्छे उन्होंने क्या पढ़ाया तरीका है तो सिंगल में मैट्रिक्स नहीं वैसे नहीं तो टेंथ बता सिस्टम में चार्जेस नहीं डबल का ऐसे कुछ नहीं है वो तो तुम 3-4 मान
लाइन है ना, लाइन तो कितने की दे सकते हैं यहाँ से, दो तो कितने की डालो, मैं भी जस्ट रिजन आऊंगी सभी होते हैं नहीं मेरा पहले हो गया मैंने उसको बता दिया वही जो पहले करा मेरा कब का नहीं था तो मैं स्टेज पे खाली हो नहीं सर ने वो सबका तो ना भी कुछ करा ना तो सिंपल है उसमें तो पहले एलिवेशन भी निकल जाएगा इसके बाद इसके 0 लोकस और 0 वो तो हमेशा ही होगा 0 पोटेंशियल लोकस सर्कल ही होगा सर्कल की क्वेश्चन क्या है सर्कल क्वेश्चन से ऐसे वैसे नहीं निकलती जैसे पहले बताया था वैसे ही निकाला ना फिर उसके बाद ये वाला कराया ये भी समझ आ गया था फॉर्मूले से पहले ये से बन गया था x माइनस 5 यही आया ना x स्क्वायर हाँ 3 से डिवाइड करना ये मैंने साइन नहीं करा मैंने भी नहीं करा वही मैं इसको देख लीजिए से कंप्लीट कर रही थी मैं भी यहीं पे पहुंची मैंने नहीं करा दीदी अच्छा वही ज़्यादा फिर उल्टे हो तो ये मुश्किल लग रहा है मतलब अगर तुम मानना चलेगी सेक्शन फॉर्मूला से निकालना है ये 2 to 1 के रेशियो है क्या मैंने ओ ऐसा और बनने की गेम थी और फिर इसकी इलेवन की आंख में तो हो गई और एक बार उन्होंने कल तो कर दिया बोला कि नहीं मैक्सिमम 6 ले मैक्सिमम 6 ले सकता है मैं स्कूल में वैसे छुट्टी ले सकता हूँ Your brain is like a circuit switch. Once you believe you are something, you actually embody that feeling. If you were, God forbid, in a coma, and you woke up, you didn't really have memory, and you were told that you used to be a Navy SEAL, and they want you back now when you're healthy. Do you think you actively hold yourself different, conduct yourself different, have a different self-concept of who you are than if you told people being successful in life is all about having the proper belief system of who you are. Truly believing that you are something unique, that you are something special in that field. If you truly believe inside that you are one of the best actors in the world, you will be entirely different than if you're like Photon girls. Your expressions will be totally different. Your tone of voice, you'll talk in a more convincing fashion. You'll use your natural voice instead of a scripted one. You'll be more emphatic. You'll be more real, more relatable. Our brain is like a circuit. And so if you introduce it with the proper wiring, एक्टिंग कॉन्सेप्ट नहीं you किया can go straight to your goal. If you're unsure about who you are, then you lose your goal. कौन बोला था You will never become a reality. Everyone comes down to even the most successful people, they do well, but they don't live there. It's how you handle those negative thoughts in that exact moment and overwhelm them with positive action. And that comes with this utmost confidence in yourself that you can handle the situation. Trust in yourself that you are better than the moment. The greats think differently. The greats see differently, right? The greats have a different worldview. The greats, they approach the game in a totally different way. So I need you to do me a huge favor. I need you to think about what you're thinking about when your effort is low. Because if you can get this, you can get any success you want in life. You can have anything you want in life if you can get this. The next time you give a low effort, right? You give it 70% or 50% or 30%. I want you to think about what you're thinking about when your effort is low. If your effort is low, you're probably not thinking about the opportunity. You're probably thinking about the obligation.
And when you think about ET, how you stay pumped up? ET, how you stay on fire? ET, how you always driven? Even in the midst of trials and tribulations, even in the midst of your haters, when people try to break you and tear you down. ET, how you stay strong? I keep thinking about the opportunity. Every single day, I'm thinking about the opportunity, and I'm not looking at this thing as an obligation. I'm not looking at this thing as something that I have to do, or that I'm forced to do, right? Something that somebody's making me do. Every time I wake up, I'm thinking, I'm alive, baby. This is the day. This is an opportunity. If you want what you've never had before, if you want to do what you've never done before, if you want to be what you've never been before, change your mentality. And I want you to see that effort goes up when you look at it as I got an opportunity of a lifetime. But you should be excited about the fact that you have an opportunity. आपको बंद कर देना इसमें रोमिंग लगती है हाँ जैसे व्हाट इज वीडियो मेरा साथ हाँ नहीं जी मुझे तो बोल गई फोन बंद हो सकता है तुझे कैसे नहीं बोला मैंने पहले बंद कर दिया था मेरे तो नेट चल रहा ही नहीं देखो मुझे आगे लगा दे बुला अच्छा ये बताइए कैसा है ये 3 इसका मतलब ऊपर रखे हैं ना तो 3 नीचे और 3 ऊपर उसके बीच के उसके जो है वो ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं अच्छा तो क्या तो वो 3 वो 414R वाली ये थोड़ी आ रहा है सॉल्यूशन हाँ, मुझे पता है लेकिन ये 414 ये वाला आता है ये दोनों मुझे पता ये आइडियल क्रिस्टल का मेरे को व्हाट डू मीन बाय आइडियल क्रिस्टल ये मेरा भी डाउट है बोला मार नहीं है तो प्रॉपर डेफिनेशन आइडियल क्रिस्टल की क्या हम लिखी भी नहीं है इसमें व्हाट इज आइडियल ये दोनों कुछ नहीं है इससे ऊपर वाला क्या है ये HCP having a volume of this with density of ions is this मेरे में चला गया आइंस में कितने नो अरे इस टेस्ट में नहीं स्कूल में पता नहीं कुछ याद नहीं होगा 11 में क्या आता है क्या है ये आइस क्रिस्टलाइजेशन एक मुझे फिजिक्स नहीं आती केमिस्ट्री आती है मैथ्स आती है मुझे मैथ्स अच्छी लगती है और दोनों राजेमा डांस ये सिंपल फॉर्मूलेशन से निकल जाएगा डेंसिटी ये मैंने पढ़ा नहीं है हद होती है बच्चा पढ़ते भी नहीं हो जेड निकालना हाँ एक सेकंड रुक जा HCP दे रही
गिना ही नहीं तो आएगा। एचसीपी में टोटल वो कितने होते हैं? 4 ही तो होते हैं तो? आइटम। 4 आइटम तो 4 ही तो H2 होंगे। एफसीसी बोलना चाह रहे हो ना? या समझ गई मैं तुम्हें। और ये वाला सारी केमिस्ट्री की डाउट्स। ये वाला असेसमेंट में आया था, ये मुझे समझ नहीं आया था कि अलोंग वन एक्सिस पे क्या कह रहे हैं, मेरा डाउट था। तो क्योंकि असेसमेंट मैंने मेरे साल में देखा था AB2 मैंने वही किया था, ये सही हुआ था। जी नहीं, हाँ जी नहीं, जो भी है B है A3B4 वो अलग था। वो उसमें यही कॉर्नर था। से हटे थे। एक ये था कि अलोंग द फेसेस एक्सिस वाला भी था। गंदा कोई कुछ दे रहे हैं लोग। तो ये तो मैंने नहीं समझा। एक ये पूछ लेना इसका क्या मतलब है। ये पहले वाले का अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव। एक एक्सिस यानी कि जो एक्स एक्सिस में जो भी लाई करे अगर वो सारे हटा दिए। NaCl स्ट्रक्चर ठीक है। आज के सेक्शन में ब्रेक इस सेक्शन को आगे बढ़ाने से पहले मुझे यहाँ पर स्टेज पर 3 वॉलंटियर सुनो भाई, सुनो पहले कि करना क्या है। एक कॉन्टेस्ट होने वाला है, आप लोगों को यहाँ पर आना है। आप लोगों को 3 वॉलंटियर मिलेंगे। चॉकलेट भी है वो मेरे को खा लेते उन्होंने आकर के यहाँ पे हैं। सब मैं लोगों के सोचा साथ मैं में घर जाते स्टेज जाते पर खाऊंगी अपना ऐसे खाना एक्सपीरियंस लेंगे। खाना ही नहीं दे रहे। उनको बताना है कि मेरे सेशंस को देखने के बाद आपकी लाइफ में अगर कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ तो अपने आप में मिरेकल लीजिए। ये वाला भी नहीं हुआ मैं छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं, पहले मैं बहुत बुरा इंसान था, मैं पूछा नहीं तो बहुत बताया नहीं था। मैंने मैं बताया। बहुत
So let's start with Raoult's law application part. So theory we have already completed. Today we will start with the application of Raoult's law. According to Raoult's law, if we are taking two solutions, let's say this is a solution having vapor pressure P naught A, and this is a pure solvent A. This is B having vapor pressure P naught B. It form a solution having mole fraction of A XA, mole fraction of B XB. Mole fraction of A is XA, mole fraction of B is XB. And we are assuming that this solution is an ideal solution. For ideal solution, delta H mixing is, delta V mixing is, so this is a perfect ideal solution. We have to calculate the total pressure of this solution, PT. Can I write? PT can be written as P naught A, XA, P naught B, XB. P naught A is the partial pressure of A, XA is the mole fraction of A, P naught B, partial pressure of B, XB, mole fraction of B. We can able to say that P naught A into XA is also known as pressure due to A, and this is pressure due to B. Pressure of A is entirely depend upon the mole fraction of A. If you increase the mole fraction of A, that means we are increasing the content of A. Clear? Now, we are saying that if I take 1 liter of A or 1 liter of B, the vapor pressure remain constant. The vapor pressure remain constant. Now, to decrease the vapor pressure, we have to decrease the number of molecule present in per centimeter square of this surface. Because the vapor pressure is surface phenomenon. Surface se molecule evaporate ho rahe. The surface phenomenon hai, right? So when we add some solute per centimeter square, the number of solvent molecule decreases because solute particle participate in that particular area. For example, for pure solvent, if there are 5 molecules and if I have added some solute, the number of molecule of solvent decrease to 2, therefore the vapor pressure decreases. That's why we are saying that the mole fraction XA, if we increase the mole fraction XA, vapor pressure increases. Is it clear? Now, I'm writing PT, P naught A, XA, P naught B, XB. Obviously, vapor pressure also depend upon one more factor, that is temperature. If you increase the temperature, vapor pressure increases. Because if you increase the temperature, that means we are providing energy. And the equilibrium shift to the direction which is endothermic. For liquid to gas, there must be a breaking of intermolecular force of attraction in case of water, that is the hydrogen bond. So if you add energy, the hydrogen bond cleavage occur and the reaction goes forward direction and vapor pressure increases. Now, if I ask you any numerical in the JEE syllabus, all the solutions which are ideal, the ideal solution are only in the syllabus. So for an ideal solution, we can able to use the Raoult's law, PT, P naught A, XA, P naught B, XB. So almost all numerical are from Raoult's law. सारे numerical किससे होंगे? Raoult's law. अब Raoult's law में numerical के point of view से rotation का area कौन-कौन सा है? कहाँ-कहाँ से हम rotation numerical का कर सकते हैं? I can able to ask you total pressure. If I ask you total pressure, P naught A, P naught B will be given. Mole fraction of XA will be given. 1 minus XA, you can able to calculate the value of XB. इसका मतलब अगर मैं XA देता हूँ, P naught A, P naught B देता हूँ, PT पूछता हूँ, तुम calculate कर लोगे. That means कोई भी numerical में
P naught A दिया होगा, P naught B दिया होगा ये. That means we have actually 4 variables. कौन कौन से 4 variables हैं? Total pressure है, P naught A, P naught B, mole fraction of XA. So these are the 4 variables. इन 4 variable में कोई 3 की वैल्यू देंगे, 4th पूछेंगे नहीं. लेकिन अगर 3 की वैल्यू दे दे, 4th पूछे तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है. So the rotation may be in case of solutions, in case of mole fraction and some part of gaseous state. Is it clear? Clear है? तो अब मैं रावर्ट्स लॉ के छोटे छोटे रोटेशंस देता हूं. ठीक है, कोई डाउट है फंडामेंटल में? एनी डाउट? Very simple equation. Total pressure can be written as P naught A XA P naught B XB for solvent or for 2 solutions. If we are adding solute to the solvent, the equation can be written as P naught A into XB or XA. So let's start the numerical first. I have taken 500 ml of water. 500 ml water at 25 degrees centigrade. I have taken 500 ml water at 25 degree centigrade. In this water, I have added 10 mole or 10 gram solute. 10 gram solute. After adding 10 gram of solute, the pressure of the solution is 260 mm. P naught of H2O is given that 320 mm. Clear? I am repeating the question. I have taken 500 ml water. P naught of H2O is 320 millimeter of Hg at 25 degrees centigrade. We have added 10 gram unknown solute. After adding 10 gram unknown solute, the vapor pressure of water from 320 mm decreased to 260 mm. So you have to calculate the molecular weight of solute. You have to calculate the molecular weight of solute. No. Chat was blinking. Can you show that? Okay. This question is not required right now. Not required.
We can solve this question through Raoult's law. So can we write pressure of solution can be written as pressure of solvent into mole fraction of solvent. Now pressure of solution is given that 260 mm. Pressure of solvent can be written as 320. Mole fraction of solvent for water, the density is 1. So for 500 ml, we can able to write 500 gram of water. That means number of mole of water are 500 upon 18 divided by 500 upon 18 plus 10 upon m. M is the molecular weight of solute. So we can able to calculate the value of this m. Is it clear? Clear? So in this question, I will ask you to calculate the unknown molecular mass of solute when the vapor pressure and partial pressure are given. Clear? Should I rub the board? Okay. Second question or second rotation based on Raoult's law. Let us assume that we have two solutions. First solution A. Second solution is B. I have taken 10 moles of A and 15 moles of B. P naught of A is 50 mm. P naught of B can be written as 100 mm. So we have two solutions. First container consists of A having 10 moles. Second container consists of B having 15 moles. The vapor pressure of first container is 50 mm. Vapor pressure of second container is 100 mm. Clear? Now, both 10 and 15 moles are added to make an ideal solution. So this is an ideal solution. Consists of two solvents A and B. You can able to calculate the mole fraction of A and B by calculating the value of 10 and 15. Is it clear? Now, when you add A and B, both A and B start evaporating at equilibrium. At equilibrium, this space consists of two type of gaseous molecule, vapors of A and vapors of B. We are assuming that vapors of A is Ya and mole fraction of vapor of B is Yb. Clear? Ya is mole fraction of A in vapor state. Yb is mole fraction of B in vapor state. Is it clear? Ya, Yb are not moles. These are the mole fraction in vapor state. Clear? You have to calculate the value of Ya and Yb. Is it clear? All other center, post your answers of mole fraction of Ya and Yb in vapor state.
Post the answer. Show. Okay. Why PA by P total is mole fraction? So if we mole fraction and vapor is equal to P upon P. Why? Okay. So this is the correct formula. Can I say in this solution, if I have to write the pressure of A, pressure due to A, I can write P naught A into mole fraction of A according to Raoult's law. Any doubt in this? I'm saying that this is a total pressure, PT. This total pressure is due to two gaseous species molecule, A and B. We know that PT can be written as pressure due to A at vapor and pressure due to B at vapor. According to Raoult's law, pressure due to A can be written as P naught A into XA. Second, now in the gaseous state, if I use partial pressure gaseous state, can I say mole fraction pressure of A can also be calculated as mole fraction of A multiplied by total pressure? First equation I have calculated pressure of A through Raoult's law. In second, I have calculated same pressure of A through partial pressure law. Is it clear? We can able to calculate the pressure of A by two different methods. So can I say P naught A, that is the partial pressure of A, multiplied by mole fraction of A, can be written as YA into total pressure PT. Now mole fraction of A in the vapor phase can be written as P naught A XA upon PT. We know that PT can be written as P naught A XA, P naught B XB. So we can able to calculate the value of YA. So in this case, YA is 50. What is the mole fraction of A? 10 by 25? Point. So 50 into 0.4 plus 100 into 0.6. So this is YA. 1 minus YA, YB. Is it clear? YA will be 0.9. You have calculated the YA equal to? It's wrong. 0.25. Someone posted the answer 0.25 is the correct. So Y is 0.25, YB is 0.75. Is it clear to all? सबको समझ में आ गया? Can I rotate this question? थोड़ा सा और rotate करें? Clear? Should I rub the board? So again, I'm asking another question.
which is similar to this one. A again 10 mole, B 15 mole, P naught of A 50, P naught of B 100. I have added two container to this, A and B. Now what is the mole fraction of A in this container? 10 upon 25. Mole fraction of B? Okay. Both A and B evaporate to give YA and YB. So this is the first container which we have made the solution. Now I have taken all the vapor from first container, collected and condensed in second container. I am repeating. At equilibrium, I have collected all the vapor of first container. I have collected all the vapor of first container, YA, YB, collected and condensed in a second container. Now in the second container, YA, YB are the mole fraction of liquid. Whereas in the first container, YA and YB are the mole fraction of vapors. Is it clear? Now allow this YA, YB mole fraction to come in the equilibrium such that YA dash and YB dash are the mole fraction of A and B in the vapor phase of second container. Is it clear? Again, this vapor is collected and condensed to the third container, and this process is repeated. This process is repeated till we reach 100th container. So you have to calculate YA 100, YB 100. That means if I collected and condensed the vapors and continue, so you have to calculate the mole fraction of vapor at 100th container, YA 100, YB 100. Is it clear? Solve. Hint 2. You can able to use AP and GP concept or something so that you can able to get some common factor and you can able to apply in sequencing manner.
ऐसा तो नहीं करोगे ना कि एक के बाद एक 100 कंटेनर कैलकुलेट कर लो। तो कुछ कॉमन चीज दिखाई दे रही है जिसको कॉमन लिया जा सकता है, ऐसा कुछ सोचो। या एपीजीपी बन रही है तो उससे देख लो। एनी अदर सेंटर? इफ यू हैव कैलकुलेटेड, पोस्ट योर आंसर। KV Ranchi, YA 100, YB 1. Okay, write down your final equation of 100th container. Write down your final equation of 100th container of YA and YB. So can I say in this equation, I can able to write P naught A XA PT into YA. From last question, we have already seen how we can able to calculate mole fraction of vapor by adding Raoult's law or by equating Raoult's law with Dalton's law of partial pressure. So I can able to write this equation Y naught A XA PT YA. Clear? So can I write P naught B XB PT YB? Clear? I am dividing both these two equations. I can able to write YA upon YB can be written as P naught A P naught B XA by XB. Is it clear? So can I say for the first container, mole fraction of A and mole fraction of B must be in the ratio of P naught A by P naught B, XA by XB. Okay. If I have to calculate mole fraction of vapor in the second container, that is YA dash, in the second container, mole fraction of liquid is YA1 YB and mole fraction of vapor is YA dash, YB dash. Now, can I write through same equation YA dash by YB dash is P naught A, P naught B, YA, YB, perfect. So replacing this YA upon YB with this equation, so I can able to get YA dash by YB dash can be written as P naught A, P naught B to the power 2 multiplied by XA, XB. Is it clear? P naught A, P naught B I have taken common. Now, you can able to write in the third container if you calculate, third container, you will write YA2, YA2 can be written as P naught A by P naught B into YA dash by YB dash, which is replaced by this equation. You will get a square here, sorry, cube here for third container. That means for 100th container, the only difference is you will get here 100. So for any nth container, you can able to calculate by this way. Is it clear? Is it clear? Clear?
So this is the third type of rotations in which I have changed the vapor pressure of gaseous state, right? Okay. Now see another question. Open up the slide first. Okay, solve this question. The vapor pressure of ethanol and methanol show their partial pressure. Ideal solution formed at the temperature by mixing 16 gram, 40 gram methanol. Calculate the vapor pressure of solution and the mole fraction of methanol in the vapor phase. This is a combination of these two concepts which we have already discussed. First is Raoult's law. Second is the calculation of vapor of any solute in the vapor phase. Somebody wrote that they have missed the 30-minute class. Yeah. I've written. There is a library option. After this, library option. They can see. Over. Vapor pressure of ethanol and methanol both are given. I think you can able to solve this one. C2H5 ethanol is 44.5. This of methanol So these are the data which is given. Partial pressure of methanol and ethanol are given. You have to calculate the total pressure as well as the mole fraction of methanol in the vapor phase. Is it clear? Simple question. So first we have to calculate the mole fraction of methanol or ethanol. So let's calculate the number of mole of ethanol. What is molecular mass? You have already calculated.
40. So number of mole is 60 upon, that is equals to 1.3. And what is the moles of methanol? That is 40 upon equals to 1 point. So these are the number of mole of ethanol and methanol. So we have to calculate for total pressure. We can able to write that P naught of C2H5OH, mole fraction of C2H5OH, P naught of methanol, mole fraction of methanol. You can able to find out the value of total pressure of. Clear है? दोनों का total pressure calculate हो जाएगा. Second, mole fraction of methanol can be calculated by mole fraction of methanol multiplied by total pressure P naught of methanol into mole fraction of methanol in liquid state. Is it clear? You have already calculated the total pressure. Put the value of total pressure. This is given. This is given. So you can able to calculate the mole fraction of methanol in vapor phase. Is it clear? Simple है? Easy है? First question है. Second. This is also example of two solution which form ideal, and one solvent is start polymerizing into an insoluble complex. If let's say one molecule form polymer, it will precipitate out, and you have added some solute to this to stop the polymerization. You have to calculate the rate constant K for that. You know the value of K. Rate constant K can be written as 2.303 by T log A naught by AT. Okay, use this equation to solve this question. Any center, if you have completed, post your answers for question number 2. हो गया? नींद आ रही है? नींद आ रही है?
Should I give you some hint? Do you require some hint? Or I have to solve this one? So this question is a mixing of two concepts actually. One is Raoult's law and second is rate constant K. Clear? So what are the data given? The vapor pressure of two miscible liquid A and B are 300 and 500. Let us assume that we have taken two liquid. Liquid A, P naught of A is 300. Perfect. Second is liquid B. P naught of B is 500. In a flask, 10 moles of A is mixed with 12 moles of B. As soon as B is added, A start polymerizing. A start polymerizing. After 100 minutes, 0.525 moles is added to arrest the polymerization. The final vapor pressure is 400. Estimate the rate constant K. Assume that neglect the volume change in the mixing polymerization. Okay. Look. This is liquid A. This is liquid A. The vapor pressure of A is P naught A, 300. This is pure liquid B. Vapor pressure is 500. Now, in this question, they have asked A is 10 mole and we have added 12 moles of B. A and B forms an ideal solution. That means you can able to use the Raoult's law. A or B ideal hai. But the problem is that when you add B, A start polymerizing into an insoluble complex. Insoluble complex. So can I write A forms a polymer at time t equals to 0, number of moles are 10. After 100 minutes, after why I have taken 100 minutes, after adding B, actually the polymerization process I think is a very slow process. So you have, as soon as B is added, A start polymerizing. That means A starts polymerizing into A insoluble. After 100 minutes, you have added 0.525 mole of solute. So after 500 minutes, the moles of A left is 10 minus X. Now A 0.525 mole solute after 100 minutes arrest the polymerization. That means polymerization stopped after 100 minutes. Is it clear? Is it clear? Now the vapor pressure at this point of this solution is 400. Is 400. You have to calculate the rate constant K for this polymerization. Is the question is clear to you? Is the question is clear to you? Again, I am repeating. This is A, 10 moles. This is B, 12 moles. As soon as B is added, A start polymerizing into an insoluble complex. After 100 minutes, I have added 0.525 mole solute to stop the polymerization. Clear? B is not involved in polymerization. That means after polymerization, the moles of B left is 12. But the moles of A left is 10 minus X, as well as the solute which you have added. We are assuming that the solute is perfectly non-volatile because the vapor pressure of solute is not mentioned in the question. Now it is clear? Take 2 minutes of time to solve this. Post your answers if you have already calculated.
Can I write down the answer? Look here. After 100 minutes, I am writing this one. After 100 minutes, can I say this container after 100 minutes, the total pressure is 400? So can I write total pressure is pressure due to A plus pressure due to B, and this total pressure is 400, PA plus PB. Okay, can I say after 400, after 100 minutes, this container actually consists of three things. One, A, which is 10 minus X, B, which is 12, and solute, which is 0.525. I'm not considering the polymer because it is precipitate out. The thing which affect the vapor pressure is the only solute which is dissolved in the solution, so that it can able to occupy the space at the surface area. If the polymer precipitated out, it is not occupying the surface area. So I am considering these three things: A, 10 minus X left after 100 minutes, B, 12, and a solute 0.525. And due to these three, the total pressure is 400. So I am writing PT can be written as PA plus PB. Now 400 can be written as PA plus PB. Can I say this 400 can be written as P naught A into XA plus P naught B into XB? Now what is P naught? That is 300. What is XA? 10 minus X. 10 minus X plus 15 plus 0.525. P naught B. What is the value of P naught B? 500. XB can be written as 12 by 10 minus X. 12.525 minus X can be written as 400. Is it clear to all? Now you can able to get the value of X from this equation. कोई doubt है बोलो 15, this one, 12 है ये. X की वैल्यू आ गई. अच्छा, अब how to calculate the rate constant K for the polymerization? Can I write polymerization to first order kinetics? Okay. Okay, they have mentioned that this line, the polymerization follow first order kinetics. So if the polymerization is first order, we can able to use rate constant K 2.303 upon T log initial concentration by final concentration 10 by 10 minus X, and time is taken as 100. I have already calculated the value of X, so we can able to get the value of rate constant K for the polymerization. Simple? Clear? Any doubt? Any other center? If you have any doubt in this question, post your questions. Any doubt in the solution? Post your questions. I'm sorry, this is not minus X. This is 0.525. Last 512 by 100 minus X plus 12 plus 0.525, not minus X. By mistake, I have wrote minus X.
DAV Ranchi, I am repeating the entire solution. So this is A. A is 10 mole, B is 12 mole. First, understand the question what they have asked. In the question, it is mentioned that when B is added in A, जब हमने B को A में add किया, तो B के presence में A की polymerization हो रही है. B polymerization में involve नहीं हो रहा. इसका मतलब अगर आपने B12 लिए हैं, तो 100 मिनट के बाद भी वो 12 ही रहेगा. It acts as a catalyst or catalyst in the polymerization reaction. So I have taken A 10 moles. After 100 minutes, the polymerization is stopped by 0.525 mole solute. A के मोल कितने बच गए? 10 minus x. कितने मिनट के बाद? 100 मिनट के बाद. और B कितने हैं? 12. So after 100 minutes, I have written that this container consists of three things. A 100 minus x, after 100 minutes 100 minus x. B 12 and the solute 0.525. Due to three solution or solute, the vapor pressure is 400. I have written PT, PA plus PB. 400 can be written as PA plus PB. 400 can be written as P naught A XA plus P naught B XB. P naught A is given. XA is moles of A divided by total moles. P naught B is 500 is given. Moles of B divided by total number of moles. I have calculated the value of X. Rate constant K for the polymerization can be written as 2.3 by T log A naught by AT, 10 by 10 minus X, because it is the first order kinetics. So you can able to calculate the value of rate constant K. Is it clear to all? Okay, moving to the next question. Where is my pen drive? It consists of a Word document. Please open it. Open this laptop also. So there is a misprint. There is some printing error, I think. X, some bracket is there. That is X dash A. X dash A is 0.75. And then last, they have written that calculate XA, P naught A, and P naught B. Okay. In this part, this is actually X dash A. Okay. And
XA, P naught A and P naught B. You have to calculate P naught A and P naught B. Can I explain the question first? समझ नहीं आया? Okay. Two liquid A and B have same molecular weight. Form an ideal solution. The solution composed of XA. Composition of XA, right? So this is our parent solution. It consists of two liquid A and B, and the mole fraction of A is XA and B is XB. It is given that the vapor pressure, the vapor pressure is 7. That means they have given that the total pressure of this solution is 700 mm. Am I right? From first two line, two liquid A and B have the same molecular weight, form an ideal solution. The solution of composition XA has a vapor pressure of 7. Sorry, it is given that has a vapor pressure 700 and last P naught A, P naught B they have asked. Okay, total pressure is given 700 mm of Hg is the total pressure of XA and XB. Clear? This above solution is distilled without reflex till 3/4 of the solution is collected as condensate. That means what they have asked, this solution, the vapors are collected and condensed. This type of question I have already discussed. The vapors are collected and condensed to the second container. तो इसमें नया क्या है? कलेक्ट करके कंडेंस किया हो तो हमने पहले भी किया बराबर. इसमें नया ये है कि when the solution is evaporated, the entire vapors are collected and condensed, and the process is again repeated. Again vapor form, again we have collected and condensed till 3/4. I think the above solution is distilled without reflux till 3/4 of the solution is collected and condensate. That means we have collected the vapor, condense it, again collected, condense it till 3/4 of the solution is collected. Now the composition of condensate XA, the mole fraction of this solution, let's say this is X dash A is 0.75 and the residue, that means the solution which is left. The solution which is left. How much solution is left? 1/4. So 1/4 जो solution बचा है वहां पे XA, small XA ले लेते हैं, 0.3 है. If the vapor of the residue, इसका vapor pressure दिया हुआ है, total pressure 600, then you have to calculate XA, P naught A, P naught B. Is it clear? या एक बार और समझाऊं? समझा देता हूं. देखो अब तो क्वेश्चन याद हो गया. हाँ, ये हमारे पास कंटेनर है. क्या है? कंटेनर. लेट्स से कंटेनर तो दे दो. देखो, लेट्स से दिस इज अ कंटेनर. इट कंसिस्ट ऑफ A and B. इसके अंदर क्या है? A and B. एंड इट कंसिस्ट ऑफ वेपर्स ऑफ A and B. सही है. Now the total pressure of this container is 700. And what is the mole fraction of A? XA, capital XA. What is the mole fraction of B? Capital XB. खत्म होगी बात. So we have considered a solution having A and B in the liquid state and the total pressure is 700. सही है? ठीक है. अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर के सारे वेपर को कलेक्ट किया और दूसरे कंटेनर में कंडेंस किया. अब नया क्या है, फिर वेपर बन गए, फिर कलेक्ट किया, फिर कंडेंस किया. ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे
जब तक इसका 3/4 इस कंटेनर में ना आ जाए। अगर इसका 3/4 नए कंटेनर में आ गया तो इसमें कितना बचा? बराबर। नाउ वी हैव टू सॉल्यूशंस, वन जहां पे 3/4 आ गया और दूसरा जहां 1/4 है। दिस इज क्लियर? नाउ इट इज गिवन दैट द 3/4 solution which is left consists of a mole fraction of a 0.75 and 1/4 mole fraction of a is 0.3, and the total pressure of this solution is, now you have to calculate P naught A, P naught B and XA in this container. Clear? Clear? So there is only one equation, that is Raoult's law, which we are going to use. एक Raoult's law है जो इसमें भी यूज होगा। अभी तुम्हें सोचना है करना क्या है, ठीक है? If any center completed this question, post your answers. You can able to post the answer in fractional way. Do not calculate the entire solution. Nand Vidya Niketan, you have asked some questions. I am unable to understand how we can divide V into X and EY. What does it mean? Please post your questions. Delete this one. Okay. Should I give you one more hint? In the first container, consider some moles of A and B, and then think that 3/4 is collected and condensed. So let's say the moles are 100. So in this container, the moles will be 3/4 into 100. You cannot able to take the value of 100 because the mole fraction is already given. You have to consider something X, Y, or anything. And 1/4 will be left in the first container. So you can able to write that total number of mole, 1/4 will be here. So you have to calculate, you have to relate somewhere such that the mole fraction and the total number of moles can be related with the number of moles of the first container. Then you can able to calculate the value of XA. इससे ज्यादा बोलूंगा तो आंसर ही नहीं आ जाएगा, इसे थोड़ा और सोचो। हो गया तो हमेशा ट्राई कर रही हो। या रेड पेन मिलेगी?
रेड मार्कर में बताऊं क्या? Okay, let us consider moles of A N1, moles of B N2, and total mole are capital N. Okay, can I write moles of A N1, moles of B N2, and total moles are capital N. So okay, I can say capital N can be written as N1 plus N2. Clear? So I'm writing capital N, N1 plus N2. And what is capital N? Total number of moles of A and B. Now, 3/4 of the entire molecules are in this container, and total number of moles is capital N. So I can say in this container, total number of moles present are 3/4 N, and in this container are perfect N/4. Now, how to calculate the mole fraction? Can I say mole fraction of A, actually number of mole of A by total moles? Can I say mole fraction of A into total number of moles? Repeating, mole fraction of A into total number of moles can be written as number of mole of A. So in this equation, can I say number of mole of A in the second container can be written as 0.753 N/4. 0.75 is the mole fraction of A. I am multiplying mole fraction of A with total moles. As I have proved that the mole fraction multiplied by total mole is the moles of a particular gas. So I am writing number of mole of A can be written as mole fraction multiplied by total number of moles. Clear? So can I write mole fraction of A in the second container is 0.3 N/4. Any doubt? So can I say total number of moles of A in this container must be moles of A plus moles of this. So I'm writing that in the first container, total number of moles, that is N1, can be written as Na of first container plus Na of second container. Now, moles of A can be written as 0.75 into 3N upon 4 plus 0.3N upon 4. This is the total moles of A. This is the total moles of A in which container? First container. Now again, listen carefully. Mole fraction of A can be written as number of moles of A in first container divided by total moles, which is N. You can able to cancel the value of N. So you can able to find out the value of capital XA. Simple. Is it clear? Okay. Now I have two more equations. One, look, mole fraction of A is 0.75. That means B is 0.25. So we have two equations actually. For this equation, I can say 600 equals to P naught A multiplied by 0.3, P naught B multiplied by 0.7. And the second equation is 700 equals to P naught A into XA, which you have calculated, P naught B into XB. This is for this container. This is for first container.
Is it clear? Now you have calculated the value of XA in this equation. Put XA. So we have two equation, two variables. We can able to calculate the value of P naught A, P naught B. So all three are calculated. Simple. All other center, is it clear? एक बार और बताऊं. Should I rub the board? एक बार और एक्सप्लेन करूं. हाँ देखो, this container consists of two liquid A and B, and I have condensed this 3/4 to this container and 1/4 is left. Okay, I have taken moles of A N1, moles of B N2, total mole N1 plus N2. I have taken N1 plus N2 capital N. Simple. Now, if I collected and condense this solution to this one till 3/4 of moles come to the second container, I can say this container consists of 3/4 N total number of moles. If total number of mole are capital N, then the second container must consist of 3/4 N total number of moles, and the rest 1/4 N are left in the first container. Okay. Now 3/4 of N are in this container. The mole fraction of A is 0.75 in this container. Clear? Without, I have multiplied mole fraction with total number of moles. Repeating, mole fraction of A into total number of mole. Mole fraction of A into total number of moles in the second container can be written as number of moles of A. In the second container, mole fraction of A multiplied by total number of mole is the moles of A in the second container. Because the moles are conserved, so total number of mole in this container is Na1 first container, Na2 second container. I have added both the moles. Okay. Number of moles of A are this much and total number of moles are capital N. I have divided capital N. So I can able to get the value of XA. If I can get the value of XA, we can able to calculate the value of XB. Now we have two equations, from one equation from first container, second equation from the third container. From first container, we can write 700 P naught A, XA, P naught B, XB, XA and XB we have already calculated. And from the third container, total pressure is 600. So P naught A 0.3, P naught B 0.7. This is the second equation. So from first and second two equation, two variable, we can able to calculate the value of P naught A, P naught B. XA we have already calculated. Is it clear? Clear है? सही है? कोई doubt तो नहीं है? Can we move to the further second question? Next question. Oh, this is again simple question. This is a new type of questions which you are saying in the question number 4. This is the equation they have given. P plus 179 XB plus 92. ठीक है. जेई में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें एक रबर्ट्स लॉ को एक अलग फॉर्म में दिखा दिया है, राइट.
तो तुम्हें करना क्या है, आपको रावल्स लॉ का इक्वेशन को लिखना है और उस फॉर्मेट पे लिखना है कि वो फॉर्मेट आ जाए, ठीक है, फिर उससे रिलेट करना है। ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ही करते हैं, ठीक है, ये ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। ये नहीं है हमारे इक्वेशन में ना, ठीक है ठीक है ठीक है, एक्सप्रेशन गलत लिखा है तुमने, ठीक है करो ना। Should I give you the hint? Hint दूं क्या?
KV Agra, the answer is correct. For A, calculate the value of B and C. So, can I write? We have to compare the relation with this equation. We have to rewrite the Raoult's law with this equation, right? So can I say total pressure can be written as, according to Raoult's law, P naught A XA, P naught B, but in this equation XB is substituted, right? So I am rewriting this as P naught A 1 minus XB plus P naught B XB, right? Can I write this P naught A minus P naught A XB plus P naught B XB? Now this equation can be rewrite as P naught A minus, if I take XB common, P naught B XB this equation can be rewrite this one. Now you can able to compare these two equations. P, right? So can I say P naught A is 92 by comparing equation 1 with equation 2? I can say P naught A equal to 92. Second thing, can I write P naught B minus P naught A is 179. Therefore, P naught B is 179 plus 92. Simple. So I can able to write the P naught A, P naught B. The first part, A part can easily be solved, right? Now calculate B and C. Have you calculated B and C? B and C हो गया सबका? If you have completed, post your answer other centers. Without using calculators. Chat was blinking.
B 8.6. $163.6. I think B part can be calculated through Raoult's law directly. We can able to find out the value of PA and PB, है ना? The vapor pressure of mixing. Okay, so we have to calculate the total pressure PT. We can able to say P naught A XA plus P naught B XB. What is the value of P naught A? 92. XA, mole fraction of A. What is A? 92. What is A? That means I think we have taken XA. XB is benzene. XB is benzene. Okay, that means A is toluene. So we have taken 936 gram of toluene, right? So we can able to write 936 upon molecular mass of toluene upon 936 by molecular what? Toluene plus 736. Sorry, 736 is toluene, right? 936 is molecular mass of benzene plus what is the value of this PB? 221. 271. 271 into 1 minus entire thing. Clear? So you can able to get the value of total pressure. Second part, B part, right? So calculate C. What are the vapor are removed and condensed to the liquid, again brought to the temperature. What will be the mole fraction of this in the vapor state? KV Nachi, C point. Point 33. Okay. C part, we can able to solve like this. Let's say this is a mole fraction of benzene, this is mole fraction of toluene, and in vapor the mole fraction of benzene, mole fraction of toluene. I think they have asked the vapor are removed, condensed to temperature. What will be the mole fraction of this in the vapor state? Okay, so YB, YT, YB dash, YT dash. Now in the C part, they have written that if the vapors are removed, these vapors are removed and condensed in a liquid and brought to the 50, again this is temperature to the 50 degree original temperature. So we have to calculate YA dash and Y dash T. Is it clear? ये कर सकते हो आप आराम से. ये तो हम निकाल ही सकते हैं. टोटल प्रेशर अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है ना, तो ये भी निकल गया ना, तो ये दोनों आ जाएंगे. कोई डाउट है? लिखने की जरूरत है? वैसे तुम डायरेक्ट इक्वेशन करके स्क्वायर करके भी कर सकते थे, जो एक लाइन में हो जाता. मैंने तो इंडिविजुअल कैलकुलेट किया, फिर यहाँ रखा, फिर उसको निकाला, है ना. तुम स्क्वायर भी यूज कर सकते थे, जो हमने पहले यूज किया है ना. इज इट क्लियर? एनी डाउट? एनी? ऑल सेंटर्स, इज इट क्लियर? शुड वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. Again, the new concept of Raoult's law. This is again entirely new concept for you, but can be solved through Raoult's law. Raoult's law ऐसे ही solve होगा. थोड़ा सोचना पड़ेगा. अच्छा क्वेश्चन है, solve करो.
think the B part answer is 0.33. Last previous question B 0.33 आया, calculate किया. Okay, 0.33. If you can understand the first three line and what is the meaning and how we can able to use this in Raoult's law, you can able to solve that particular question. First three line are very important, so read carefully. Show me the previous question. B किसी ने सॉल्व किया? बताओ. 163.6 कैलकुलेटर से क्या? ठीक है. स्क्रीन में फिफ्थ दिखा दीजिए. हिंट चाहिए, हिंट. ओके, मैं हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करूंगा. ठीक, फिर एक बार ट्राई करना. कैन आई से वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड is actually equilibrium constant at that particular temperature? बोल सकते हैं? नहीं. देखो, जैसे at 25 degree centigrade evaporation and condensation are equal. जिस टाइम पे रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल होते हैं, उस समय पे इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन. तो इसमें अगर ये H2O लिक्विड है तो इट इज इन इक्विलिब्रियम विद H2O गैस. तो व्हाई दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वेपर प्रेशर इज a constant value? Because at equilibrium the value of delta G is 0. डेल्टा जी 0 है तभी तो वो इक्विलिब्रियम पे आया, इसलिए वो वैल्यू कांस्टेंट है. करेक्ट. अच्छा, अब इस वेपर प्रेशर कांस्टेंट वैल्यू को निकालने के तरीके क्या है? वो तरीका वही है जो हमने फर्स्ट थ्री लाइन में मेंशन किया है. ठीक से पढ़ो इसे. द मोलर
volume of liquid benzene. How you define molar volume? Volume of 1 mole of liquid. तो 1 mole liquid अगर मैं 1 mole water लूं, that is approximately 18 gram of water. So how you define 1 mole liquid? 1 mole liquid of water means 18 gram of water. That means 18 ml of water. So if 18 ml of water is evaporated, the volume increased to the particular 20 degrees centigrade and 1 atmospheric or any pressure, the volume increased 2750 times. So this line explains that if the molar volume of liquid benzene, that means if you take 1 mole liquid benzene and you evaporate 1 mole liquid benzene, the new volume of liquid benzene in the vapor phase is itne times the volume at liquid. नहीं आया, दोबारा बोलूं. मान लो 1 मोल वाटर लेते हो आप, तो 1 मोल वाटर का मतलब कितना ml वाटर लिया होगा. अब उस 18 ml वाटर को ना कंप्लीटली इवापोरेट करो, तब भी क्या वो 18 ml रहेगा? बढ़ेगा ना. तो वो बढ़ के मैंने कहा 2000 टाइम बढ़ गया, तो तुम्हें पता चल गया कि उसका वॉल्यूम कितना होगा. ये बात समझ में आई? इस एक लाइन से मैं उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लूंगा. तुम कर सकते हो तो करो. क्लियर है? लास्ट क्लास बेंड्स ऑफ फैक्टर डिस्कस हुआ था. दिखाओ. कहाँ है? बेंड्स ऑफ नहीं हुआ. आगे बढ़े, एक्सप्लेन करूं? नहीं होगा? एनी सेंटर? ओके. Now, from this line, how to calculate the vapor pressure of benzene? Okay. Can I say 1 mole benzene means 78 gram benzene? ठीक है? Therefore, x mole benzene, 78 x gram benzene. कोई डाउट है? Now, volume of x mole benzene can be written as 78x upon density 0.877 ग्राम पर ml दिया था ना. डेंसिटी अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं ना, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ बेंजीन इन द लिक्विड स्टेट डिवाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 2750. See this figure. I'm repeating. This is the volume of x mole benzene when it evaporated at 20 degrees centigrade. 1 mole benzene 78 gram, x mole benzene 78x. Volume of x mole benzene, 78x is the
weight of benzene, weight divided by density is the volume of x mole benzene multiplied by 2750 is the volume of liquid benzene upon evaporation. कोई doubt है? चलो. Now we have to calculate the pressure of benzene. Can I say PV equals to nRT? Now, how you define vapor pressure? You have taken benzene in a container, perfectly evacuated container. Now, benzene start evaporating as a vapor and condensation also start. At time t equal to t, when the equilibrium reached, the evaporation and condensation are equal. You have calculated the number of molecule above the liquid are, let's say x mole. I am saying that the pressure due to x mole, the pressure exerted by x mole is the vapor pressure of benzene. Can I say? Initially, I have taken benzene in a container. This benzene start evaporating, then condensation. At equilibrium, x mole benzene left in the gaseous state. This x mole benzene exhibit a pressure to that particular liquid, and the pressure is known as vapor pressure of benzene. कोई doubt है? That means we have to calculate the pressure due to x mole of benzene, which is vapor pressure or pure benzene pressure. So I have written PV equals to nRT. x mole benzene का जो भी pressure होगा वो vapor pressure होगा. तो अब मैं ऐसा लिख रहा हूं, P नॉट बेंजीन कर दिया मैंने इसको, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन. x मोल बेंजीन का वॉल्यूम 78x2750 अपॉन 0.77 मल्टीप्लाइड बाय 1000 लीटर में, ml में था ना वो, दैट इज इक्वल्स टू x 0.0821 293 20 डिग्री. कोई डाउट है? ये देखो x x कैंसिल हो रहा है, ये क्या आया? पी नॉट बेंजीन. ऐसे ही पी नॉट टॉलिन निकाल लोगे, अगर दोनों निकल गए तो लास्ट पार्ट सॉल्व हो गया. लास्ट पार्ट वही है, वेपर पे उसका मोल फ्रैक्शन कितना है. पी नॉट ए, पी नॉट टॉलिन, पी नॉट बेंजीन निकल गया तो वेपर पे वाई ए निकल नहीं जाएगा टोटल प्रेशर से. आ गया? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ऑल सेंटर इट इज क्लियर? Okay, can we move to next question? This question is clear? Clear? So, till question number 5, we have discussed all the rotations of Raoult's law. All the rotations of Raoult's law. Now, we have 4 colligative properties in liquid state. 4 colligative property. All the theory part of colligative property you have already done in last class. First colligative property, relative lowering in vapor pressure. Second colligative property, elevation in boiling point. Third, fourth, osmotic pressure. Okay. In last class, I think Vent's-Off factor is not covered. So let I explain you what is Vent's-Off factor. Then we will go to solve this question. Vent's-Off factor एक ऐसा फैक्टर है जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज हो रहा है. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब में. सही है. मैं एक को एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद वो सारी चीजें उसमें आ जाएंगी. क्यों यूज कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है. राइट. देखो,
Let us consider a solution H2O. I'm talking about boiling point. I'm talking about boiling point. According to IUPAC definition of boiling point of any liquid, IUPAC ने boiling point को define किया है इसलिए कि सब जगह वो constant रहे. ठीक है, तो IUPAC की definition से boiling point related है. अगर वो definition change हुआ तो हमारी boiling point सबकी बदल जाएगी. तो how you define boiling point? The temperature at which vapor pressure of that particular liquid equals to 760 mm is known as boiling point of that particular liquid. Water की boiling point कितनी है? That means at 100 degree centigrade the vapor pressure of H2O is 760 mm. Okay. Now if I add solute in this water, let's say sodium chloride, अगर हम इसमें सोडियम क्लोराइड को ऐड कर दें तो उसे वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ा? डिक्रीज हुआ. अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? दैट मींस ऑन एडिंग सॉल्यूट द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट्स, which is known as change in boiling point, delta TB. Okay, delta TB is mainly depend upon the molality of the solute. So we can able to write that delta TB, change in boiling point, is proportional to molality, and delta TB equals to Kb is a constant into molality. Now delta TB can be written as Kb, weight of solute, molecular weight of solute, 1000 into weight of solvent in gram multiplied by 1000. Perfect. In kg. कोई doubt? Clear है ये? Now can I say a single line? आपको बताना है true है false. सोच के बताना. Boiling point is not depend upon the nature of solute. Correct or wrong? Boiling point is not depend upon the nature of solute. That means if I add sodium chloride in 1 liter of water 1 mole, the elevation in boiling point is let's say 2 degree. अगर मैं उसकी जगह ग्लूकोज डालता 1 मोल तब भी एलिवेशन 2 डिग्री का ही होता. मैंने जो बोला वो सही है या गलत है? कैसे गलत है? मैंने बोला है. Delta TB can be written as Kb. See, this equation can be remodified as weight by molecular weight can be written as number of moles divided by weight of solvent multiplied by 1000. You are able to calculate the value of delta TB. मान लो आपने 1 मोल NaCl डाला, N की जगह कितना रखोगी? ये तो कांस्टेंट है ना, 1000 ग्राम. ओके, N की जगह 1. अगर 1 मोल ग्लूकोज डालते तो 1 मोल पोटेशियम परमैंगनेट डालते तो 1. इसको कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा. कॉलिगेटिव नाम ही पड़ा इसलिए. इससे पहले कॉलिगेटिव को डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी कहते थे. व्हाई डेमोक्रेटिक? बिकॉज दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी which is not depend upon nature of solute. It only depends upon number of solutes. It only depend upon number of solute. Nature of solute के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा. केमिस्ट्री में ऐसे प्रॉपर्टी अकेली यही है जो नेचर के ऊपर ही डिपेंड नहीं कर रहा. आप सोडियम डालो पोटेशियम डालो उससे फर्क नहीं. सोडियम और पोटेशियम कितने मोल डाले से फर्क पड़ रहा है. बराबर है. Now I have to calculate whether the delta TB from this equation is correct or not. ठीक है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं. देखो, मैंने 500 ग्राम वाटर लिया. I have taken 500 gram water. I have taken 1 mole sodium chloride. Listen carefully. 1 mole sodium chloride in 500 gram of water. ठीक है, delta TB कैलकुलेट करते हैं. Now, how to calculate the value of delta TB? I can say delta TB equal to Kb. Kb is a constant value 1.86, 1.186 something. Weight of solute by molecular weight is mole, which is 1. आप इसको 1 कर दो. Weight of solvent 500, यानी 0.5 हो गया. Delta TB आ गया. Let's say after calculating the value of delta TB, the delta TB is 5 degree. Now the new boiling point of the water is 105. आपने जब 1 मोल सोडियम क्लोराइड का डाला तो आपने जो कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू कितनी आई? 105. Now we have to check. हम ये चेक करते हैं कि जो फॉर्मूले से हमने बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट किया वो परफेक्ट है या नहीं है. तो मैंने इसी वाटर को एक इंस्ट्रूमेंट में रखा और ये चेक किया कि बॉइलिंग पॉइंट कितनी आ रही है. बराबर है. मतलब न्यू बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट इज 110 डिग्री. कितना? 110. हमारा फॉर्मूला कितना बताया? 105. दोनों में सही कौन होगा?
इंस्ट्रूमेंट या फॉर्मूले? इसका मतलब इस फॉर्मूले में कुछ प्रॉब्लम है. अब प्रॉब्लम क्या है ये समझो. Assuming that I have added 1 mole Na plus, that is not possible to add only cation. For example, I have added 1 mole Na plus only in this water. If I add 1 mole Na plus, the elevation in boiling point is 5 degree again. If I take 1 mole NaCl, again the elevation is 5 degree according to the formula. But when you add 1 mole NaCl in water, it dissociates to form Na plus and Cl minus. Now the water get 2 moles of ions. 1 mole Na plus, 1 mole Cl minus. So the experimental data must be 10 degree raise. But according to my formula, the number of mole is 1, so it comes to 5 degree. Error आया ना? बराबर है? तो error कब आएगा? जब आप मॉलिक्यूल डाल रहे हो, वो मॉलिक्यूल पानी में जाने के बाद, और तब तो प्रॉब्लम आएगी. नहीं है, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब मॉलिक्यूल डिसोशिएट भी नहीं कर रहा है, एसोसिएट भी नहीं कर रहा है, ऐसे मॉलिक्यूल ही नहीं है. सॉरी, नहीं है बोलना ठीक नहीं है, बहुत कम है. ज्यादातर मॉलिक्यूल डिसोशिएट कर जाएंगे और एसोसिएट कर जाएंगे. बराबर. तो अब हमें इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना है. क्लियर है? तो मॉडिफिकेशन के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है. वो क्या? सो कैन आई से देयर आर 2 टाइप ऑफ टीबी राइट नाउ. वन टीबी which we are going to calculate is known as calculative value. Why calculative? Because we are calculating from the equation. And second is the experimental, which instrument calculate. Let us say we have taken HaC moles, HaC moles, and it form an equilibrium with H plus and A minus. H plus form an equilibrium with H plus and A minus. At time t equal to 0, I have added C mole. In this time, H plus and A minus are 0, 0. At time t equal to t, when the equilibrium reach, the concentration of Ha or moles of Ha decrease from C minus alpha, alpha, alpha. Clear? Now, can I say that delta TB calculative is proportional to moles which we are going to add in the 1 liter of water? भाई फॉर्मूले में तो हमें इससे कोई मतलब नहीं ना. हमें तो इससे मतलब है आपने सॉल्ट कितना डाला, आपने सॉल्ट कितना डाला, सी. तो सी के हिसाब से डेल्टा टीबी कैलकुलेटिव की वैल्यू बताएंगे. इसलिए मैंने लिखा डेल्टा सीबी, डेल्टा टी कैलकुलेटिव, द कैलकुलेटिव वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू सी. सी इज द मोल्स ऑफ सॉलिड व्हिच यू आर गोइंग टू ऐड. बराबर है? बट डेल्टा टीबी experimental, the experimental data mainly depends upon the number of salt form in the water, irrespective of which you are adding. अब number of mole salt कितने बने? ये C minus alpha, ये alpha, ये alpha है. That means total number of mole is C plus alpha. Is it clear? So if I divide these two equations, the proportionality term or the constant term cancelled out. Can I write delta TB calculative upon delta TB experimental is equals to moles at equilibrium. Initial mole by moles at equilibrium. Now this equation can be rewrite as delta TB calculative C plus alpha upon C equals to delta TB experimental. कोई doubt है? Now moles at equilibrium by initial mole is known as Vents-Off factor, which is defined by I. So can I say if I multiply the Vents-Off factor I with delta TB calculative, the value always equals to experimental value. And how we define I? I is moles at equilibrium by initial mole. आ गया? हाँ? If the value of I is greater than 1, if the value of I is greater than 1, then experimental value is always higher as compared to calculative value. If the value of I is less than 1, experimental value is less than calculative value. If I equals to 1, experimental and calculative are always equal. Clear? Clear? Should I rub the board?
Vents of factor I for different salt can be calculated as, let's say, case 1, for strong electrolyte like NaCl, sodium chloride, can I say it give Na plus and Cl minus no equilibrium form? Initially C, 0, C, C. Now I can be written as 2C by C equals to 2. Case 2, for strong electrolyte. Let's say we have taken Al2SO4 whole thrice. It gives 2Al3 plus and 3SO4 2 minus. C 0 0. At equilibrium this is 0, 2C, 3C. The Vents factor is 5C by C. Can be written as 5. है ना? Case 3. Let's say we are talking about the weak electrolyte like acetic acid, silver chloride, which forms an equilibrium C00, C minus alpha alpha alpha. The Vents factor I can be written as C plus alpha upon C. There might be possible that polymerization occurs. For different electrolyte, the polymerization may occur, like acetic acid when dissolved in benzene. It forms dimer by hydrogen bond. So the Vents factor I can be written as C minus alpha by 2 by C. Like this type of different type of salt have different behavior. You just have to calculate whether they are dissociating, whether they are associating. You can able to calculate the value of I. Multiplying the value of I to the original value, you can able to get the exact experimental data from the calculated data. Is it clear? Is it clear? Now the rotation from the questions. How इससे question पूछते कैसे हैं? अब वो आपको boiling point दे देंगे. Experimental वाला. मोलैरिटी दिया होगा, आई की वैल्यू निकाल लोगे, आई की वैल्यू से आप अल्फा निकाल लोगे तो वो इक्विलिब्रियम के बारे में पूछ सकते हैं. मान लो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं कि 10 ग्राम फिनॉल इज एडेड इन वाटर. आफ्टर एडिंग 10 ग्राम फिनॉल द बॉइलिंग पॉइंट रेज इज 2 डिग्री. देन फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर फिनॉल और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pH ऑफ फिनॉल. मैंने टीवी दिया, आई तो निकाल लोगे, आई निकल गया तो अल्फा आ गया. जो भी अल्फा की वैल्यू माइनस लॉग ऑफ अल्फा कैन बी रिटन एज pH, क्योंकि माइनस लॉग H प्लस कैन बी रिटन एज pH. And alpha is the concentration of H plus. So we can able to calculate the value of pH as well as we can able to calculate the value of pH as well as Ka, alpha square by C minus alpha. Clear? So this is the first question or first application of Vents factor I. Question number 6. The freezing point of an aqueous solution of KCN. लिखा हुआ है. The freezing point of aqueous solution of KCN containing इतना gram. Okay. Solve it. If you required any hint, you saved the Word document. Word document save किया था आपने? इसमें गड़बड़ है.
This reaction is incomplete. The product is HgCN M minus M plus 2. ठीक है? See, the freezing point of an aqueous solution of KCN contained 0.1892 mole. KCN 0.1892 मोल है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट है -0.704. ठीक है, उसमें HgCN डाला तो फ्रीजिंग पॉइंट 0.704 से 0.530 आया. फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ गया, इसका मतलब आयंस कहीं ना कहीं कम हुए होंगे. Now we have to calculate exact ions. So can I write CN minus 0.1892 and HgCN 0.095. Actually, in numerical, to calculate the value of I, there are two factors. One, either you have to write the equation and calculate number of mole at equilibrium divided by initial mole, that is the I. Second way out, we are not going to use the French factor I, we just calculate the total number of ions, add the molality in the total number of ions. Clear? मतलब समझ में आया? मान लो NaCl के 2 मोल्स दिए, आप बेंजो फैक्टर I यूज करोगे तो 2 यूज करोगे ना, तो जो भी कैलकुलेटिव वैल्यू आई उसमें इनटू 2 करोगे. मैं बेंजो फैक्टर I यूज नहीं करता, मैं ऐसे सोचता हूँ क्वेश्चन को कि व्हेन सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर इट इज कन्वर्टेड टू 2 आयन Na plus and Cl minus. I have taken Na plus as a 2 mole, Cl minus as a 2 mole, that means total number of ion are 4. तो मैं 4 रखूंगा, मेरा आंसर आपका आंसर सेम नहीं आएगा. तो अगर मैं वेंस ऑफ फैक्टर आई यूज नहीं करना चाहता, मैं इंडिविजुअल मोलैरिटी ऑफ आयंस यूज करूं तो कोई गड़बड़ है? मैं इस क्वेश्चन में यही करूंगा. देखो 0.095 HgCN है और Cn माइनस कितना है, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस m. हमें m की वैल्यू चाहिए, सही है ना? देखो क्या ये कहना ठीक होगा, मैं यहां पे इसको लिमिटिंग ले रहा हूं तो ये 0.1892 minus m 0.095. Cn minus after reaction इतने मोल बचेंगे और ये कॉम्प्लेक्स 0.095 बनेगा. I have taken as this reagent as a limiting reagent. ठीक है, ये कितना हुआ 0. 1 mole required m mole, 0.095 required 0.095 into m. So Cn minus left 0.1892 minus 0.095 m, and this complex form is 0.095. Is it clear? Without a now after reaction, now this container consists of 3 different ion. One K plus, which is 0.1892. Why K plus? Because you have added KCN. I have taken Cn 0.095 in this equation. K plus तो solution में ही है ना, तो K plus 0.18. Secondly, we have taken Cn minus. Cn minus 0.189 minus 0.095 m.
and the complex which is 0.095. सही है, मैंने वेंसो फैक्टर आई यूज नहीं किया, बट क्या मैं ये कह सकता हूं अगर मैं इन तीनों की मोलैलिटी को ऐड कर दूं, दैट इज द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट. सही है ना, एंड द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन एज 0.53. इनिशियली इट वाज, so delta TF you can able to calculate. So delta TF can be written as this plus this plus this into KF. KF given है, KF is given नहीं है, तो उस एक्सप्रेशन में सिर्फ m ही एक अकेला वेरिएबल है. So from that equation you can able to calculate the value of m. m आ गया तो फॉर्मूला का कॉम्प्लेक्स आ गया. Is it clear? Any doubt? So Venshaw factor can be used to calculate the equilibrium constant pH as well as the molecular formula of some complex. नहीं है? This equation or this question is a very good example how to use the Venshaw factor for calculating the molecular formula of a complex. Is it clear? Is it clear? Sometime the Venshaw factor as well as these concepts are also used in an experiment which is known as Ostwald experiment. Ostwald experiment is used to calculate the relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure. So there is an instrument in which we can able to calculate the vapor pressure. ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे. See, let us take a container connected one by one. This container is interconnected with 3 different containers. ठीक है, first container में we have taken solution, second container pure solvent, third container consists of a salt or crystals which are hydroscopic in nature like calcium chloride and all that, which can able to absorb H2O from air. ठीक है, now I have passed a dry air from this point. यहां से हमने क्या पास किया? ड्राई एयर. ड्राई एयर जैसी पास होगी, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बताएगा कि ड्राई एयर का वेट कितना है. ड्राई एयर का मतलब क्या हुआ? वाटर कंटेंट 0. तो ड्राई एयर इसमें जैसी एंटर होगी तो उसका वेट आ जाएगा कि भाई ड्राई एयर जो आप पास कर रहे हो उसका इतना वेट है. नाउ दिस कंटेनर कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूशन, दैट मींस इट कंसिस्ट ऑफ H2O. It consists of H2O.
when dry air pass through this container, all the H2O are absorbed by this dry air. अब जब ड्राई एयर यहां एंटर करेगी ना, तो इस ड्राई एयर का वेट क्या हो चुका होगा? W2 बढ़ गया. This W2 value is increase in weight, not the net weight. Clear? This W2 is the increase in weight, not the net weight. So tell me, W2 जो बढ़ा वो सिर्फ वाटर की वजह से बढ़ा होगा ना? ठीक. Now when the dry air enter to this, इसमें पहले से वाटर के मॉलिक्यूल रहे होंगे, लेकिन यहां पे वाटर के मॉलिक्यूल इससे ज्यादा होंगे क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है. ठीक है ना? तो ये जब यहां से आगे आएगा तो अगेन वेट इंक्रीज टू W3. ठीक है. अब मैं यहाँ एक लाइन लिख रहा हूं, 2 लाइन. तुम ये बताना ये दोनों लाइन तुम्हें समझ आया या नहीं. आई एम सेइंग दैट W2 is proportional to pressure of solution and W3 is proportional to pressure of solvent. Correct or wrong? Correct or wrong? If W3 is the increase in weight, if W3 is the increase in weight, then it will be the wrong because already it consists of water. So we will write W2 plus W3 is the pressure of solvent. ठीक है. बोलो. एक्सप्लेन करने के लिए बताता हूं. लेट्स से सॉल्वेंट के ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल है 15, प्योर सॉल्वेंट में 20 है. कितने? 20. तो जब ड्राई एयर आएगी ना तो 50 वाटर के मॉलिक्यूल यहां चले गए, इसका वेट कम होगा और ड्राई एयर का वेट बढ़ेगा. तो कई बार इसका वेट देते हैं, कई बार ड्राई एयर का वेट देंगे. तो जब ये आगे गया तो इसमें 15 वाटर के मॉलिक्यूल थे, तो दिस W2 इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. जब ये आगे आया तो इसमें 15 थे पहले से, इसके 5 और आगे तो इक्विलिब्रियम आ गया. तो ये W3 5 के इक्वल होगा ना. W3 जो 5 का इक्वल हुआ तो मैंने इसको इससे अगर ऐड किया तो वो 20 आएगा ना. तो वो सॉल्वेंट के बराबर होगा. बोलो. या आप ये कह लो कि सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू W3. दिस कैन आल्सो बी रिटन. क्योंकि आपने 15 डाले थे, ये 5 और आए तो इंक्रीज तो 5 का हुआ ना. वो 5 इसका प्रेशर माइनस इसका प्रेशर ही तो था. Now, this dry air, when come to this point, it consists of 20 water molecules. All 20 are absorbed by hydroscopic. The weight increased to W3. I can able to say W4. Sorry, I can able to say W4 is proportional to pressure of solvent. Can I say W2 by W3? Sorry, W3 by W2 क्या आएगा? सॉल्वेंट सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन. लेकिन अगर मैं W4 कर दूं तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आएगा. यही तो होता है. पॉइंट ये नहीं कि इसमें क्या आ रहा है, पॉइंट ये कि W2, W3 एंड W4 जो इंक्रीज इन वेट है वो किसकी वजह से, समझ गए? देखो 15 वाटर के मॉलिक्यूल थे ना, तो W2 15 के इक्वल हुआ, तो W2 इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. जब ये आगे आया तो 15 पहले से थे, तो 20 में से 5 यहां गए, तो W3 5 की वजह से बढ़ रहा है ना. तो W3 इंक्रीज जो है दैट इज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. ये देखो. ठीक है. Now, जब ये यहाँ आया तो it consists of 20 water molecule and all 20 water molecule is absorbed by hydroscopic solvent. So this weight increase W4 is proportional to solvent. Solvent clear है? मैंने W3 by W4 किया तो एक्चुअल में मैंने किया क्या? प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट किया, W3 upon W4, which is relative lowering in vapor pressure. That can be written as mole fraction of solute.
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। भाई देखो, अगर आप ये कहते हो कि वाटर का वेपर प्रेशर 100 है, कितना है, आपने सॉल्यूट डाला 80 हो गया, कितना mm कम हो गया, कितना परसेंट कम हुआ, फ्रैक्शन 20/100, तो ये फ्रैक्शन ही तो आ रहा है। फ्रैक्शन कितना कम हो रहा है मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ऑब्वियसली। मोल फ्रैक्शन किसका मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूट का। जितना ज्यादा आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे, वेपर प्रेशर उतना कम होगा, रिलेटिव लोअरिंग उतना डिक्रीज करेगा। नहीं है? क्लियर है? कोई डाउट है? सो कैन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? Okay, this is a simple question. You can able to solve this one. Chat blink कर रहा है. Any hint is required for question number 7? (100 gram) sucrose solution means it consists of two things, sucrose and water. So you have to take that weight of sucrose plus weight of water is 100 gram. Can I say at how you define freezing point? Freezing point of any liquid can be defined as the temperature at which the vapor pressure of that liquid is equals to 760. Freezing point can be defined as the vapor temperature at which the vapor pressure of liquid equals to the vapor pressure of that particular solid. Why we are saying solid? We can able to say that the vapor pressure can be 0. The only reason to say solid is if I take the temperature at which the vapor pressure is 0, that means I am decreasing the temperature and the equilibrium goes to infinite. So we cannot able to do that because the delta G must be 0. So we are taking solid. So in this container, the freezing point is minus 0.38. The freezing point of water is 0 degree centigrade. That means at 0 degree centigrade, water start freezing. मतलब 0 डिग्री में वो आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर रहा है. तो अगर हमने उसमें सुक्रोज सॉल्यूशन लिया है तो minus 0.38 पे वो स्टार्ट कर रहा है, बराबर. ठीक. Can I say the weight of sucrose is x, weight of water is 100 minus x. Now delta TF can be written as KF into molality. Delta TF 0.38. The value of KF is 1.86 mole. Sucrose weight x gram. What is the molecular mass of sucrose? 342 multiplied by 100 minus x into 1000. You can able to find the value of x. Clear?
let's say the value of X is 20 gram. Can I say 20 gram of sucrose is present in 80 gram of water to make that 100 gram sucrose solution? So in the second solution, the temperature is decreased to minus 0.5 degree. Minus 0.5. At minus 0.5 degree, can I say the volume of water or the weight of water decreases? At minus 5, some portion of water is converted to ice. Some portion of water is converted to ice. But the weight of sucrose remain constant. That is, if I calculate is 20 grams, the weight of sucrose remain 20 gram. Again, I am writing minus delta TF 0.5. This value of X remains same. 342 into Y into 1000. You have calculated the value of X. Just put the value of X. You can find the value of Y. हम Y की value निकाल लेंगे. Let's say the value of X is 20 gram. Then the volume or the weight of water is 80 gram in the initial. अब आप यहां से water निकालो. अगर वो 60 ग्राम आया, कितना? 60. तो initially water कितना था? अब कितना हो गया? कितना ग्राम कम हुआ? वो कहां गया? Ice. So the amount of water converted to ice is 20 gram. Clear? Clear? Okay. So we have almost completed the Wentz factor as well as Raoult's law. All questions. You complete your booklet theory. Next class we will start with some new topic. Thank you.